Yeah, guys, sorry. Let's get started today. There's some problem in the portal, so इसलिए class थोड़ा late हो गया. Um, okay. Guys, did you guys try to revise whatever you learned yesterday? Any doubts you faced or any approaches you faced difficulty in? Anything, even the smallest of the doubts are fine. Let's take some time for the doubts, and then we can decide what shall we do. Do you want to discuss do you want me to discuss any of the other topic doubts or assignments, like we were discussing the ZORs, right? Did you guys try to do that? Hello. Sure. Okay, cool. I'll tell that thing. Okay. So let me just see the portal questions जो तुम बोल रहे हो कि like it the is the yeah. अच्छा. देखो guys look at this. Yeah, I'm sharing my screen. Let me share my screen. So देखो यार, एक बार पोर्टल क्वेश्चन मैंने अभी खोला, पहली बार खोल रहा हूँ, राइट? So I can see that my height of the binary tree search किया, and then I clicked on Java again. So there's the whole code is made again, right? Like you can see that the whole code is there. You just need to populate this method. Don't you guys agree with this thing? Hello. So height of the binary tree, so like this question is same as the question which we solved yesterday, right? So maybe we didn't code it, but I'll just code it. We'll be doing more practical way, but it is the same thing, right? So ये देखो एक बार level order traversal. If I open this, so you can see that the whole code is there. Don't you think? Like I just need to populate this thing, correct? Where is that? Here, level order. I just need to populate this thing, right? So someone wrote this, but I need to write it here actually. Don't you agree, guys? Hello? Right? You can see that Queue and then you're pushing it into the queue, and then you're getting a result array list, and then you're polling it. And if it is left is present, you're pushing, right is present, you're not pushing. So this is a more simpler question than what we solved yesterday in the lead code. Don't you guys agree? Hello? No, they won't ask. Som Sundar, they won't ask. ठीक है, unless it's a specific tree like binary search tree, जिसको हम डिस्कस करेंगे. बाइनरी ट्री को तो मैन्युअली कर पाएंगे, तो they won't be asking us that 100%. है ना? तो देखो यार, like this question level order traversal, right? So इसमें क्या करना है, right? They are just taking a queue, ठीक है? And they are adding this root node into that queue, and they are just popping the elements from the queue and like saving it into the result. And if at all left is not null, then they are adding it into the queue. If right is not equal to null, then they are adding it into the queue. In that way they're doing, right? This is a pretty straightforward approach of level order traversal. Guys, don't you agree? Like this is what they're doing, right? Oh, I forgot that. Sorry. एक मिनट रुको, मैं लेके आ रहा हूँ. So what I'm saying is कि if we have a tree like this, ठीक है, if we have a tree like this, ठीक है, 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, and यहाँ पे 6 है, and यहाँ पे 15 है, correct? So what they're doing is they are just basically getting whatever is the root and pushing it into the queue, correct? You pushed 4 here, and then if left is present, they're pushing left as well. If the right is present, then pushing right as well.
right? And this has been popped, right? So they push these things, and then they're popping this, and they are pushing, since left is not there, they're pushing only right, and then this has been popped, since left is not there, they're only pushing right. Okay, in this way, order by order, piece by piece, they are just taking the elements from the queue and just putting it into the array list. Any doubts in this application of level order traversal, guys? Like, this is the usual pq dot poll is nothing but queue, है ना? तो pq is nothing but an object का name. ठीक है, देखो यार, ये बहुत सिंपल है. लाइक दिस द एक्चुअल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल. लीड कोड में क्या हो गया ना, दे वांटेडली मेड अस टू डू हाउ वी आर डूइंग इट इन ईच लेवल, बट that way, ठीक है, this is the blunt way of doing the level order traversal, right? So if you do it in that way, the way where we how we did in the lead code, that will teach you a lot, because that same template, ठीक है, the same question can be asked in a many other ways. You can think about that. एक बार सोचो उसके बारे में. ठीक है, तो लेट्स रिवाइज दिस थिंग्स. ठीक है, unless तुम लोग को कुछ और बात करना है, like for few minutes we can spare that time and then we'll revise it and we'll do more questions, जिससे practically तुम्हें ज्यादा knowledge मिलेगा. ठीक है, will actually code today a lot. ठीक है, and then if time permits, I think time will permit, we'll start another topic. ठीक है, and अगर कुछ डाउट है रिगार्डिंग yesterday's class or anything, ठीक है, let me know. कुछ भी इन जनरल, ट्रीज के बारे में या कुछ भी, लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम यस्टरडेज क्लास. ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कंटेस्ट के लिए ठीक है, कंटेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है, ठीक है, कंटेस्ट के लिए यू गाइस विल नीड टू स्टार्ट. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ट्रीज को इंक्लूड करेंगे कि नहीं, दैट्स नॉट डिसाइडेड. ठीक है, तो इफ एट ऑल ट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड देन आई लेट यू नो. ठीक है, तो सो टुमारो, ओह सॉरी, टुमारो तो शायद ट्रीज नहीं होंगे. ठीक है, मोस्टली. ठीक है, विल सी व्हाट वी कैन डू. ठीक है, आई लेट यू नो. ठीक है, एंड और कोई क्वेश्चन? समवन इज आस्किंग कि इंटरव्यू कितना देर का होता है? मुबारक, आई थिंक इंटरव्यू 1 आवर का होता है. ठीक है, 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स मैक्स, मैक्सिमम टॉपिक टॉकिंग. इससे ऊपर नहीं जाता, राइट? सो कंटेस्ट कल है ना, द सैटरडे कंटेस्ट, राइट? सो कल अच्छी तरह से देना, एंड उसके बाद like we can have a discussion on Sunday, and then Diwali break, and you will be having few days to work on yourself, right? जो भी backlogs are, try to do them. ठीक है, and then we'll come back and we'll discuss all those questions. We'll solve all the pending assignment questions. ठीक है, so okay, sure Gagan, I'll look into the questions once, and I'll just skip those questions if at all they are repeated. I don't think we'll be having a class tomorrow, right? ठीक है, और कुछ यार, और कुछ, anything else you want to know? You'll be having holidays from 24th. From 24th. है ना? तो लेट्स सी क्या करें. ठीक है, 24th तो शायद 3 दिन या 6 दिन, आई डोंट थिंक 3 दिन होगा, है ना? 6 दिन तो पॉसिबल नहीं है, टेस्ट आ जाएगा. सो 3 डेज का टेस्ट, 3 डेज का हॉलीडेज है, 24th 25th एंड 26th. या सो यूज दोस टाइम. ठीक है, एज मच एज पॉसिबल. तुम लोग के पास 3 घंटा ज्यादा मिल रहा है, तो वो जो भी क्वेश्चंस है तो उनको अच्छी तरह से करना, ट्राई करना. ठीक है, हो या ना हो, ट्राई दम. ठीक है, विथ योर बेस्ट. ठीक है, वट एवर नॉलेज यू गेन. ठीक है, revise all the PPTs. ठीक है, do start your revision in that 3 days as well, and then take them as a test. ठीक है, so Abhishek is asking what is the impact of contest on overall performance of the final student in placement, right? So bro, देखो Abhishek, DSA is one part where you're training your mind to think in a very different way and all those things, right? But doing the contest is the actual thing, right? You won't be checked to how you're thinking. Okay, the first step to get into an interview,
to get into any company is the coding test, correct? So you should be acing the coding test. Coding test में हमेशा time constraint होता है, ऐसे कोई coding test होता ही नहीं है, except few companies जो coding test नहीं लेते, they are different type of things. जैसे Udaan is a really good company. It's a startup basically. So Udaan will be taking a test. It is not doing the DSA. Okay, it will be asking you. It will be giving you 1 to 2 days of time. I think 1 day of time, and it will ask you to create some APIs. मतलब development कराते हैं basically, and you need to submit that project. And if they like it, then you will be selected. Okay. लेकिन I'm talking about majority of the companies. 99.9% of the companies will be taking the DSA round. राइट? सो डीएसए कोडिंग टेस्ट होने वाला है, तो उसमें हमेशा टेस्ट का टाइम होगा 1.5 आवर या 2 आवर्स होता है. यू नीड टू कंप्लीट द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस. आई एम नॉट जोकिंग, ऑल द क्वेश्चंस करना होगा तुम्हें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सब क्वेश्चंस कर पाना चाहिए तुम लोग को. ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ह्यूज कंपनीज. ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉलर कंपनीज, राइट? सो इफ यू आर able to solve all the questions, 3 out of 3 questions, 2 out of 2 questions, ठीक है? Then like there is good chance that you will be called for interview. So this is the first step, right? Thinking in the time constraint. The way you think when you're leisurely doing, the way you think in the time is completely different. Okay, you need to train your mind for thinking in the time constraint, right? So easily if you do the contest, right, you'll be actually understanding, you'll be getting into that environment of doing the test, right? So do give the test, don't skip any test. Okay. Yeah, fast people. I'm saying ki if you solve all the questions, there is a high chance that you will be asked. Okay, but if you just solve 1 question out of 3 questions, like I'll be saying ki most of the questions, most of the times you won't be get selected. Okay, unless the difficulty of the paper is too hard. Okay, personally speaking, मैं बहुत सारे companies, around 10-15 companies का सब questions solve कर दिया, but like I never used to get called for the interview. ठीक है? हाँ, सो ब्रूट फोर्स से टेस्ट पास हो जाएगा तब जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो ऑप्टिमाइज कोड करके. हाँ, या मुबारक, यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट मैन, क्योंकि ऐसा होने वाला है ना कि देयर विल बी सम टेस्ट केसेस, अराउंड 10 to 15 टेस्ट केसेस. ठीक है? तो इफ यू राइट द कोड इन ब्रूट फोर्स वे, द फर्स्ट 4 टेस्ट केसेस माइट वर्क. ठीक है? लेकिन उसके आगे काम नहीं करेंगे, उसके आगे काम ही नहीं करेंगे. राइट? तो उसके आगे काम नहीं करेगा तो like that is partially correct answer बोलेंगे उसको, right? It's not a complete correct answer, right? तो उसकी ध्यान रखो. ठीक है? तो तुम लोग को जितना टाइम कंस्ट्रेंट मिला उसमें कंप्लीट करना होगा. कभी कभी like in one question I did it in n square approach but it worked, right? All the test cases passed, right? So there's no problem. ठीक है? लेकिन अगर सब टेस्ट केस पास नहीं हो रहा and still you are not able to do it, right? And partially हो रहा है तो वो partial marks ही मिलेगा, correct? जैसे कि I was telling about Uber, right? Uber में 3 questions थे. I did 2.5 questions out of 3 questions. This question is based on stack. एक question जो रह गया था, that is based on stack because of identification. ठीक है? I couldn't identify that problem is a stack problem, right? तो उसमें problem हो गई थी, right? So after which question, Rohan, I'll tell you which question. ठीक है? So there's a question, if you guys remember, in stack एक क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम. डू यू गाइस नो दिस? मैक्सिमम एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम याद है किसी को? है ना? डन है ना गगन, राइट? सो हाँ, आई विल टेल यू संकेत नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? हाँ, इट्स अ फेमस क्वेश्चन. ठीक है? बेसिकली मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ टू द पीपल हु डोंट रिमेंबर, राइट? यू विल बी हैविंग एन एरे एंड यू कैन अज्यूम एरे का लाइक एक हिस्टोग्राम की तरह. यू कैन अज्यूम कि व्हाट बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू एक बिल्डिंग की हाइट की तरह समझ लो, करेक्ट? समथिंग लाइक दिस, है ना? सो यू आर सपोज्ड टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम दैट विल बी फॉर्म्ड, करेक्ट? तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर ईच वैल्यू यू विल बी सर्चिंग फॉर द nearest smallest element to the left and nearest smallest element to the right. You can see that this is the smallest element. So this building can be extended till this point, right? And this building can be extended till this point because this is the smallest point.
So this is one of the histogram. Correct. The same way, this guy cannot be extended. So this is another histogram. Right. This guy can also be not extended. This is another histogram. You can see that this will be extended till this position. Okay. And this will be another histogram. And this will be extended till the end. Right. This is another histogram. You're supposed to tell what is the maximum area. How do you do it? First, for each element, find nearest smallest element to the left, nearest smallest element to the right. Do you guys agree? फिर इसके बाद एक लूप चलाओ and find area. Guys, किसी को याद है कि नहीं यार ये क्वेश्चन? रिस्पॉन्स करो थोड़ा. है कि नहीं? सो हाँ, नो कौन नो बोल रहा है? ओके, नो वरीज. ठीक है, तो एक तो तुम बिग ऑफ n यूज करके यू आर फाइंडिंग व्हाट इज द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट and nearest smallest element to the right kya you will be finding. Do you guys agree? Hello? So that will be done in big of n for all the values, correct? Because using the stack, है ना? So this question is second question in Uber. लेकिन अब तुम पूछोगे ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया मैंने, है ना? तो लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं थी. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया था कि आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, राइट? So I know this question, I solved this question multiple times, I know how to code this, right? But question ऐसा था कि something like question का मैं vocabulary बताता हूँ. Question ऐसा था कि a driver, ठीक है, Uber driver का जो per kilometer जो cost है, that is varying according to the days, according to each hour. ठीक है, it's like they have given me an array. It's like कि 3 rupees per kilometer, 5 rupees per kilometer, 7 rupees per kilometer, something like this. ठीक है guys, something like this. ठीक है, something like this. ठीक है, I don't exactly remember, it's already more than 3 years or 4 years, right? So question ऐसा था कि this is the cost per hour this guy will be getting, right? So maximum cost this guy can get. ठीक है, so something like कि so the driver can work contiguous manner. ऐसा नहीं कि थोड़ी देर यहाँ काम करेगा, थोड़ी देर यहाँ पे काम करेगा, but he need to get the maximum result, maximum पैसे चाहिए उसको, right? That is the question, right? It is like you're given an array which is telling the number of rupees he'll be getting at max at that particular hour. Okay, he need to work continuously. You can think of it in this way. If he is getting in this way, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, right? Something like this, right? So he need to work in a continuous manner, in some continuous bandwidth, right? But the maximum he'll be getting is the least of that bandwidth, है ना? तुम देख सकते हो, if he decided to work in this particular band, ठीक है, मतलब first hour से 5 hours तक काम करने की कोशिश किया, then like he'll be getting only this much, not this much, least मिलेगा उसे. So he need to multiply it with the number of hours, right? So it is like 7, like it is like if 3 rupees per hour, right? So he'll be like 3 rupees into this much. So in a way they are asking for the area, maximum area of this histogram. But identifying this is a tough task, है ना? अब ये हिस्टोग्राम मैं तुम लोग को बता दिया, है ना? But think of it in this way. यहाँ पे बोला था कि each hour this guy will be working. If he worked in that particular hour, he'll be getting this much amount. ठीक है? But if he decided to work in he should decide he can work at any time. ठीक है? From any time to any time. But he should work continuously. ठीक है? Only doing that time. ठीक है? तो and he'll be getting the minimum of all the hours he worked. सोचो इसके बारे में. If he decided to work from first hour to 5th hour, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मिनिमम कौन सा है? ये है ना? तो he'll be getting this as a maximum into this area, into the number of hours. This is maximum area of the histogram. लेकिन मैं डायग्राम बना दिया तुम लोग के लिए, इसीलिए इजी लग रहा है. लेकिन एक बार सोचो कि ये एरे दे दिया तुमको एंड दे हैव सेड कि दिस थिंग कि मिनिमम मिलेगा, तुम्हें कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये लाइक यू नीड टू प्लॉट दिस आउट एंड यू नीड टू थिंक कि ये कौन सा क्वेश्चन है, करेक्ट? राइट?
So I'll repeat it in English for the people who didn't understood. Okay. So what I'm saying is, Rohan, that's what I did. Okay. That's what I did. But that's not the answer, na? So then I went for the brute force approach. Even that worked, but 2.5, right? And to the girl who got the same, even she got selected in Uber, but I didn't get selected because, obviously, right? So thing is, key, the question says, like it's not gender discrimination. It is that every company kind of have a reservation ki these many number of girls need to be there, like at least 30% girls need to be there out of the team, right? So that there's some balance that is maintained, right? So you can see that if you go into engineering institutes, in a big institutes, right? So what happens is the gender ratio is very less, the sex ratio is very less for the girls. Okay, so like 10% will be girls and 90% will be boys, right? So but these 10 girls, 10% are fighting for the 30%, but this 90% is fighting for the 70%, right? So that's where you might be feeling that discrimination, but that's what it is. It's the reality, but you don't, I told you, right? You should not be crying over this thing. But accept karo ki this is there for you and you should fight for this, right? So let me tell you again, let me complete this thing. Okay? The question is, you're given an array which is saying ki the number he will be getting if he worked that particular hour, right? If he decided to work at that particular hour, he'll be getting that. Okay? But if he decided to work in a continuous bandwidth of time, like मतलब ये 1 hour से 5 hour तक काम करने की कोशिश किया, ठीक है, then he'll be getting minimum of them throughout the time. This is a histogram, right? लेकिन प्रॉब्लम देखो, मैं 1 2 3 4 ऐसे दिखा दिया इंडेक्स की तरह, वहां पे 1 2 3 4 नहीं, वहां पे टाइम है 130 230 in that way. It became more difficult than that, right? So the question, see, this question is famous question. I guess Bhavya has taught you this question, right? It is like you'll be understanding how nearest smallest element to the left, nearest smallest element to the right, and all these things are helping you to achieve the thing. But in the exam, you'll be getting the question in this way. Okay, you should identify that this question is nothing but this question. I realized this thing in the last 5 minutes. I couldn't code it in the last 5 minutes. तो तुम लोग को ये चीज रियलाइज करना पड़ेगा, right? So you can solve all the questions, man. You can solve all the questions of all the companies right now if sitting, but doing it in the contest is different, right? So that is what I'm saying. When there's a pressure, time pressure, you need to adapt yourself for that. What was the time you got to solve the 3 questions? I think it's 1.5 hour mostly. 1.5 hour ही लगता है. 1.5 hour भी देंगे. And they are good level questions, to be honest, right? तो एक और क्वेश्चन था कुछ एरिया का, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चंस थे. बट ये सेकंड क्वेश्चन थी मैक्सिमम एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम, व्हिच आई रियलाइज्ड इन द लास्ट मोमेंट. So देखो, it's all about कि you guys will be learning. That's what I'm saying ना. You guys, every one of you is learning the syllabus. Even a Google aspirant can get there, right? If you aspire to be in Google, right? Or if you aspire to be in Microsoft, right? Any company you take, you name it, everything you're learning. It's just that how much deeply you learn, how much deeply you fixated in your mind, okay? And how deeply are you practicing, and how deeply are you putting pressure on yourself, okay? So that you are becoming better version of yourself. बस यही matter करता है. Yeah, right. So that is Atlassian. How much CDC is Atlassian is offering, bro, Gagan? 43. Acha, cool. 43 na, like it offers 80. Like because like most of the things is stocks in that company, in Atlassian, right? It's a like basis is not that great. It's 20 bases, right? But remaining things are stocks. Okay, anyways, guys, are you understanding how the questions will be tweaked? No one is expecting, okay? You are just freshers, okay, coming from the college, or just like you guys have the age of less than 30, right? Less than 27 or 28.
right? You guys are not scientists. You guys need not, like, even the interviewers are not expecting you to create an algorithm, right? You can't create an algorithm. You're too young for that. Okay? They're not expecting that. The only thing they're expecting is existing algorithms को identify करना. Identify the existing algorithms in the question. Malab, it is the same question, but they won't be saying कि maximum area of the histogram find करो. They won't be asking that. They'll be twisting it in a such a way that you just need to untangle it. You just need to realize, oh, ये तो ये question है, right? The moment you do that, okay, then it is over. Then you can do it. Only that you just need to like understand the tweaked version of that question and code that particular thing. बस इतना ही है. That this is the whole coding process. ठीक है? Right. So, chalo guys, let's get started with the trees. Okay. We'll have discussion today. कल काफी silence था. We'll have discussion. I'll let you guys unmute if it is genuine enough. ठीक है. तो वो चीज का ध्यान रखते हुए we'll unmute. ठीक है. We'll discuss the things. ठीक है. And we'll kind of make good progress today. ठीक है. Bear with us, right? So देखो यहाँ पे like the important thing of trees, you are given a root variable, reference variable, which will be identifying the whole tree. Agreed? Yes or no बोलो, है ना? Correct? तो देखो, like the traversals are of two type, DFS and BFS. DFS is depth first search, which is of two orders, three orders. I mean, pre-order, in-order, and post-order. Pre-order matlab node will be traversed before left and right. In-order matlab node will be traversed in between left and right. Post-order matlab left and right will be traversed and will be traversed at the end, right? So DFS का खास बात यह है कि you will be traversing the whole depth first, and then you'll be traveling the other things, right? You'll be going to the depth first, and then you'll be coming up, and then this depth. In that way, you'll be traversing. Breadth first, such means you'll be traversing the breadth first, as a breadth, yeah, breadth. Like you're increasing the breadth, right? If you start this point, you are increasing the breadth. You're kind of increasing the radius, correct? So that is what breadth first search is. Definitely, this guy will be taking up a queue, and this guy will be taking up a stack. Stack either in the form of recursion, yeah, explicitly you'll be making a stack in iterative manner, correct? Guys, is this cool? This part I've just shown you how what does it mean to be a pre-order traversal of a tree, what does it mean to be an in-order traversal of a tree, right? And like we have done couple of things. We have then went to level order traversal. Then I showed you the coding part, because see, you're calling the pre-order of the left after this particular printing, right? After that particular element print. This guy will be calling the same function again from here, right? Till the end, right? So this will be like in a way, you're printing the node or you're adding the node, and then you need to do the pre-order of the left subtree, right? So you'll be calling the same function, root.left, correct? So like this particular thing will kind of traverse the whole left subtree. The same way right subtree will be traversed completely. Hello guys. So I hope you guys realize how this is working, right? So अभी भी इसमें doubt है, so we can't move forward because this is the most basic thing of trees, right? So how you're printing it, you're printing one value, you're traversing the whole left subtree, and then you're traversing the whole right subtree, right? So in this way, if you understand the recursion, you'll understand that there's a stack that is of a height h that is present, correct? Hence the space complexity is big of h, correct? Right? So uske baad, I showed you the magic of recursion, how you'll be thinking of the same problem for the smaller input. Whatever is that result, you'll be just adding, like you'll be just doing some operation to get this particular value, the whole value, correct? Tushar says on portal pre-order traversal. I'll see that, man, Tushar. Okay.
जो भी है, like you don't do the order, ठीक है, you will be doing only this thing, ठीक है. Let me just see pre-order किधर है. Guys, try these questions, man. These questions are really beautiful, man. Try these questions. Let me just see what he's saying. Okay, so basically these guys are talking about binary search tree, right? So I'll tell you about this thing, ठीक है. I'm saying कि we can create a tree, ठीक है. We can create a tree using programming, but programming का मतलब क्या है? You're automating something, right? लेकिन ऑटोमेट करने के लिए कोई रूल होने चाहिए ना, इस रूल के हिसाब से ऑटोमेट कर रहा हूँ करके. अगर मैन्युअली अगर मैं बोलूंगा ऐसे जंगली सा एक ट्री बनाने के लिए बोलूंगा, like I need to systematically tell my computer that this is how you do it, this is how you do it, right? Only then it can be done, right? So that is what I'm saying. If you're building a tree, that is the only manual process, ठीक है, वो पूरा मैन्युअली बनाएगा. लेकिन if you're creating a special tree which is having a specific rule of creation, like binary search tree, like AVL trees, like red black trees, right? तो उस केस में I can write a program to automate it, ठीक है. So I'll today, if possible, if the time permits, we'll write that automated code, ठीक है. No worries, guys. But ठीक है. So let's see, ठीक है. तो ये हो गया, प्री ऑर्डर हो गया, सबको समझ में आएगा प्री ऑर्डर, right? And then I showed you the iterative version of the pre-order. This is the most interesting, right? So how do you do the iterative code, ठीक है. Recursion में our recursive call that we made will be waiting, okay, will be waiting till the left subtree gets completed and then the right subtree will be called, correct? But instead of that, in the iterative version, what we do is we'll store the right subtree before we go to the left subtree, so that if the left subtree gets exhausted, we'll be picking the top element of the stack, that is right subtree. समझा guys? देखो, this is the only point, this is the whole point. Before going to the left subtree, store the right subtree. That is what I'm doing. I can just run it again, ठीक है. तो एक बार देखो root ये है, ठीक है. I'll print the root, ठीक है. Then I can see that I need to go to left, but before going to left, ठीक है, I'll store 3 inside my stack, and then I go to left, ठीक है. Then I'll print it again 2, right? And again before going to this thing, I'll store 5, right? And then I'll go here and again I'll print this. Again, before going to left, I'll store this thing, but there is no value of the right, so I won't store anything. But I'll be here and it is null. The moment I am null, it is understood that this particular left subtree is done. So I'll pick up the top element, which is the right subtree of the most recently traversing subtree. That is the reason why we use stack, है ना. Stack में क्या कर रहा है, ठीक है. तो stack में we are putting the latest put value, ठीक है. The last the first put value, the latest put value, last in first out, right? So last put value will be coming out first, bro. So this subtree से जो भी हमने push किया 5, that will be getting. So I'll be printing 5 again. If at all there's any value, I'll push it, but there's no value, so I'll go to left. It is null. So since I can see that this whole thing is null, right? This whole subtree is traversed, and it means the temp is null का मतलब है the whole subtree is traversed. Then I'll pick up the top element, that is 3. So I'll be going here. Temp is 3, right? So I'll be printing the 3. Correct? ठीक है. So Dinesh, try to watch the lecture, ठीक है. Yesterday में कल काफी अच्छी तरह से we discussed this thing, ठीक है. So basically you'll be going to the left. Before going to the left subtree, you store the right subtree, and the moment the temp variable becomes null, you'll be picking up the top element of the right sub of the stack, ठीक है. Dinesh, no worries, it is not prolonging, ठीक है. This is done here, like the iterative code of pre-order is done here. You won't be learning anything further after this, ठीक है. So whatever you're learning is completely independent. So try to view the lecture once, Dinesh. It will help you. Okay. So we have taken a bigger example and also we tried it. Watch it in 1.5 or something. Okay. You'll understand it. Okay. And then level order traversal. ये भी बहुत simple है. I told you, right?
एक वैल्यू लो, पुट इट इन द क्यूब, उस वैल्यू को निकालो, उसका बच्चे डालो, एक एक वैल्यू को निकालते जाओ, उसका बच्चे डालते जाओ. करेक्ट. इट इज वेरी सिंपल when it is just the printing of the level order traversal in the form of an array, right? But it will get complicated, okay, when you are supposed to print only the you're supposed to return a list of lists, okay. You're supposed to return the list of lists of each level, correct? So for that, what you'll do is you'll just take what is the initial size of the queue, right? So initially the size of the queue is 1, right? So if you take the size of the queue as 1, and you'll just continue removing the elements one time, n number of times, that is one time, and you'll remove it, and with every removal you'll be adding its children into the queue. And the moment one is done, this iteration is done, you'll stop. Again you'll calculate, you'll decide that this is a break, right? Ek level khatam ho gaya, and again you'll see what is the size of the queue again. Now it is 2, right? So you kind of put a barrier here. Matlab, you won't remove the elements after 2. Okay, so you'll remove the 2 elements one by one and add the children in that way. Correct. After 2 elements are done, I'll package them in a list and then put that list into this particular list. Correct. So again the same thing. Like you will be judging what is the size of the queue, that is n equals to 4, right? And then you'll be only kind of putting a barrier. You'll only remove the 4 elements, okay? And you'll package them into a list and then send it, okay? Uske baad 5 elements, okay? So this particular template of this code, this is a way too good. Matlab, like there will be multiple questions you can solve just by this template. I'll tell you guys. I'll tell you how. Okay. So अभी बताओ. अभी मैं एक question दूंगा. Reni, listen to this question. Are you there? Hello. So I'm asking, can you find the right view of a tree? That is my question. Right view of a tree. So if you have a tree like this, take up 1, 2, some value like 3. So some value like 4, some value like 5, okay, some value like 6, okay, and then some value like 7, some value like 8, some value like 10, right? Some value like 11, okay. So what is the right view of this tree? मतलब if you look at this tree from the right side, मतलब इस तरफ से देख रहे हो, क्या क्या दिखेगा? कोई बता सकता है? क्या क्या दिखेगा? पहले 1 दिखेगा, उसके बाद 3 दिखेगा, उसके बाद 5 दिखेगा, उसके बाद 6 दिखेगा, उसके बाद 8 दिखेगा, उसके बाद 10 दिखेगा. Agreed? Guys, is the question understood? Right view of the tree. The question is, can you print the right view of the tree? मतलब, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल में तुम राइट साइड से देख रहे हो, ठीक है. अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ठीक है, 3 दिखेगा. दिस गाय इज नॉट विजिबल बिकॉज दिस गाय इज शैडोइंग हिम. करेक्ट. मतलब ये बंदा इसको ब्लॉक कर दे रहा है. एग्रीड? राइट. सोचो यार 8 क्यों? ठीक है, इस लेवल में ओनली 8 इज प्रेजेंट ना. इवन इफ देयर इज अनदर वैल्यू दैट इज 9, ठीक है, इवन देन 8 विल बी विजिबल. डू यू गाइस एग्री? एट ईच लेवल, करेक्ट करेक्ट. राइट व्यू ऑफ द ट्री में एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है. यू आर सपोज टू टेल व्हाट इज द राइट व्यू ऑफ द ट्री. अभी देखो क्वेश्चन ऐसे दिया कि एक ट्री है, उसका राइट साइड से अगर कोई बंदा देख रहा है उसको क्या दिखेगा ये बताओ करके, राइट. ये क्वेश्चन में दिया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे. तुम लोग को ये समझना है राइट व्यू ऑफ द ट्री का मतलब है लास्ट नोड इन दैट लेवल, है ना. उसके अलावा उस पर्टिकुलर नोड का कोई भी आइडेंटिटी नहीं है. करेक्ट. देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. ठीक है. लीफ नोड्स का आइडेंटिटी होता है, ठीक है,
So if I ask you guys कि can you print all the leaf nodes of a tree, can you guys do it? क्या है लीफ नोड्स? 11 एक लीफ नोड है, 9 एक लीफ नोड है, मतलब वापस 11, 10 एक लीफ नोड है, 6 एक लीफ नोड है. कैन यू प्रिंट दिस थिंग्स गाइस? यस. इसके लिए क्या करोगे? यू विल जस्ट डू प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या लेवल ऑर्डर, एनीथिंग इज फाइन. वी जस्ट डू गो टू ईच एंड एवरी नोड, जस्ट सी उसका राइट और लेफ्ट चाइल्ड दोनों नल है कि नहीं. If both of them are null, correct? If both of them are null, in that case, you will be printing it. Do you guys agree? Hello? है ना? So just look at this. वो leaf nodes पूछा था, we did it. We used an algorithm. लेकिन अभी ये पूछा, like we can identify a leaf node. How is a leaf node identified? Left और right child को देख के दोनों null है, तो it's a leaf node. This is the identification factor of it. लेकिन यहाँ पे क्या आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है? यू नीड टू क्रिएट एन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ऑफ द नोड्स, लास्ट नोड्स इन दैट लेवल, करेक्ट? तो उसके लिए लीड कोड में जो क्वेश्चन हमने किया ना, द क्वेश्चन ऑफ लिस्ट, राइट? तो उसी लिस्ट में लास्ट वैल्यू मतलब n-1 वैल्यू का नोड विल बी योर आंसर. डोंट यू गाइस एग्री? किसी का डाउट है इसके बारे में? यू विल बी रिमूविंग, you'll be performing the level order traversal the same way, but the difference is कि while you're removing, you'll just check, you'll just put one more check कि if the I value is n-1, अगर ये last node है क्या हमारे level का, अगर है तो निकालो बाहर. Can't we do it by creating the same list and then choosing the last element? Yeah, you can do that, Prabha. It's all about the implementation. बट आइडिया देखो ना, ठीक है? इंप्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन आइडिया क्या है? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, हम हाउ डिड वी डिड्यूस इट एंड हाउ डिड वी लिंक इट विद द नोन एल्गोरिथम. दैट इज ऑल अबाउट द होल प्रोसीजर मैन. डीएसए का पूरा प्रोसीजर इस पे चल रहा है. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एनी न्यू एल्गोरिथम, यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट द एल्गोरिथम्स. ठीक है? यू आर नॉट you should not be you should not be making the wires, you should not be making the electricity. You are just an electrician who is fixing the wiring and connecting the switches, right? तो वैसे समझो, ये आना चाहिए, उसका इलेक्ट्रिशियन बोलता है, right? Not the person who invented the electricity. You will be reaching there slowly, right? You might be introducing you might be writing an algorithm on your own, right? One of my friend did, okay, and his paper got published. He worked in something in ML, and his paper got published by the Harvard, right? So Harvard, sorry. So ऐसे कर सकते हो, you will be reaching there, but initially while you're getting recruited in a company, this is what you are expected to do. Connect the dots, बस. अच्छा, मैं लेफ्ट व्यू पूछूंगा तो वो कैसे करोगे? करेक्ट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, करेक्ट, वैसे ही. ठीक है? सो अगेन लेट्स गो बैक टू रिकर्शन. ठीक है? तो सेम ट्री, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है? वी रियलाइज दैट ऑर्डर इज नॉट एवरीथिंग. ठीक है? यू शुड आल्सो गो विद द स्ट्रक्चर एज वेल, राइट? सो what you'll be doing is basically you'll be just comparing that value, and you'll be just calling the same function for both of its left subtrees. The same thing you'll be doing for the right subtrees of both the trees, right? And if this is true, this is also true, and this is also true. तीनों के बीच में and है ना, logical and है ना. So all of these are true, then you'll be getting the value true. Agreed? ऑर्डर समझ गया, बट लिस्ट में कैसे करते वो वाला पार्ट समझ नहीं है. आई डिडंट गेट यू मुबारक. व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली? हाँ, यू कैन डू प्रभा ऑल द 4 व्यूज. मतलब टॉप व्यू कैसे करोगे? हाउ विल यू डू द टॉप व्यू? सोचो टॉप व्यू के बारे में कैसे करोगे.
हेलो हेलो। हेलो हाय। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर मैं कह रहा था वो तो समझ आ गया लेवल ऑर्डर, बट वो जो लिस्ट सेंड करा था ना सर, उसमें मतलब रिटर्न करा था तो वो समझ नहीं आता पार्ट। भाई। मतलब वो जो लीड कोड का सर, वो जो क्वेश्चन करा था आपने। हाँ, तो उसमें ब्रो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यू का जो साइज है, ठीक है, हम्म। क्यू का जो साइज कितना है वो पता करके यू आर जस्ट पुशिंग ओनली। देखो, एट एनी पॉइंट, ठीक है, मतलब पहली बार जब तुम क्यू का साइज देख रहे हो, क्या तुम मानते हो कि वट एवर इज द साइज ऑफ द क्यू इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर लेवल? यस। बस वही है। पहला एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक ही लेवल का है, राइट? सो यू एज्यूम दैट साइज इज 1. So you'll just remove one element and push it into a list and then push that list into the bigger list. तो सर उसके ये बाद सर हेलो सर, वो हाँ, पोल एंड रिमूव में क्या है सर, दोनों तो एक ही चीज है ना। हाँ, तुम अभी के लिए समझ सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो पोल और रिमूव दोनों एक ही चीज है, समझ लो, ठीक है। बस पोल में ये डिफरेंस है कि अगर पोल करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं बचा ना, सो दैट वोंट रिटर्न अ कंप्लीट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, बस वही डिफरेंस है। लेकिन पोल और रिमूव तो सेम है। ठीक है, बस ये पूछना था। ओके। थैंक यू सर। Top view corner element that are first and last element. एक second. We need to maintain horizontal distance from the root. Then first element for unique distance is correct. ठीक है, we'll discuss those things. ठीक है, don't worry. ठीक है, तो देखो यार, ये सेम ट्री में भी like you're doing the same thing as recursion, right? You are just bothered about one value, correct? This is A and this is B, right? There's another tree that is A, and you have some other subtree, and you have another subtree, right? B, right? So you can compare this value, okay, this value and this value, and you are just passing the responsibility of the same function for the smaller input. देखो ये दोनों सेम है, you'll just call the same function, same tree for its left subtrees. ये दोनों सेम है, तो बताओ यार, दोनों सेम है तो just return same. उसके बाद you'll do the same thing for the right subtree as well. अच्छा, ये दोनों सेम है तो रिटर्न करो, राइट? मतलब दोनों, like these both should be same, these both should be same, and these two values should also be same. तो ये तीनों के बीच में and लगा के you are just returning the true. This is one of the classic question of recursion, ठीक है? And at any point if both of them are null, then it's cool, right? क्योंकि लीफ नोड का दोनों चाइल्ड नल होता है, right? So that thing will be taken care of by this statement, है ना? लेकिन if any one of them is null, the other guy is not null, ठीक है? In that case you will be returning false. So that is what OR statement means. Agreed, guys? वैसे ही यार, like how this is done, how all these things are done. So this is pretty much how everything is done. ठीक है, and then we did have another beautiful question, that is maximum depth, correct? So maximum depth में again you pass the same thing, ठीक है? तो let me just code it, like उसके बाद ज्यादा clear होगा शायद, ठीक है? So what I'm saying is कि I'll call this function, ठीक है? हमेशा recursion जब भी like जब भी trees का क्वेश्चन होता है, think of it in a smaller way, ठीक है? So if maximum depth of tree should return what is the height of that tree, ठीक है? So then what I'll be doing is I'll be just calling the same function for the smaller input of this subtree and this subtree, right? So if you call for this subtree, this will be giving the value as 2, correct? And if you call it for this subtree, you'll be giving the value as 1, right? So ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, right? And maximum depth का मतलब क्या है? Like maximum करेगा ना, like this is one value, one node, so you'll just add 1 to it. मतलब if you consider this as the answer, then it is going to be 1 plus 1, that is 2. or if you consider this as the answer, 2 plus 1, that is 3. 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, कौन सा maximum है? ये maximum है. So you'll just take the maximum out of it, ठीक है? I'm just assuming this guy is working. ये हमको दे देगा, लाइक इस पे कॉल करूंगा तो इसका वैल्यू दे देगा. वो कैसे देगा? दैट इज द रिकरेंस रिलेशन, हाउ वर्क इज वर्किंग, ठीक है? तुम्हें बस ये दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है. कनेक्शन क्या है? 1 प्लस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 20 या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 9, दोनों में से
जो भी height है, जो भी maximum है, you just need to add 1 to it. That is your answer. This recurrence relation will make up everything. क्योंकि like this guy will be calling for these both values. These both values will be calling for its null values. Null values दोनों 0 देंगे, तो 1 plus maximum of 0 हो जाएगा. So that is 1. यहाँ पे भी same चीज 1, right? तो दोनों 1 है, तो you'll just do 1 plus 1, that is 2. You'll have written 2. यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, यहाँ से 2 रिटर्न हुआ, दोनों से मैक्सिमम क्या है 2. So you'll take up 2 and then you'll add 1 to it, that is 3. Agreed? ठीक है, पोर्टल पे भी कर सकता है. Yeah, correct, Prabhu. It is the height. You can call it as height. ठीक है. So let me just do it here and let me just copy the same in the portal as well. So base condition is going to be root equals to null. In that case, you'll be returning 0. ठीक है. If उसके बाद return 1 plus math dot max root of left comma root dot right. बस यही है. This is the whole code. और कुछ है ही नहीं. Guys, I'm telling you guys again and again. अगर input नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं. Like I didn't teach you, so like there's no automated way to create a tree. So let's not think about it. ठीक है. मतलब we'll do it but not now. We'll do that. Wait, but यहाँ पे problem क्या पहले ढूंढने दो मुझे. No suitable method found for. अच्छा. Okay, my bad. मैं like I'm starting से ये बोल रहा हूँ कि अगर automated way नहीं है, do it in the lead code for now. ठीक है. When you do that automated, you can't wait for the questions, right? So do the questions, same questions here. ठीक है. Because everything is ready. If at all the boiler code is not present there. ठीक है. If the boiler code is there, then stop complaining. ठीक है. So let me just copy this thing. It got selected, right? It got worked, right? Let me do it in the portal. ठीक है. सो यहाँ पे हाइट का मतलब क्या देखो, यहाँ पे भी हाइट का मतलब सेम है, राइट? सो लेट मी राइट इट हियर. सो इट इज नेम्ड एज रूट फॉर नाउ एंड लेट मी जस्ट नेम इट एज हाइट. ठीक है, सबमिट ही करो. These guys are using another technique of using a character to check if it's a left tree or right tree. It's a manual way of doing it. ठीक है, तो इसीलिए you can't input. It worked. See. हाँ. Okay. So why we add 1 to the answer? See, Yashwin, why are we adding 1 to the answer is कि whatever the height we got from the right subtree, whatever we had height got for the right subtree, उसका +1 होगा ना, the height of this whole tree because of adding of this node. Ashwin, you answer. +1 क्यों कर रहा है? We'll do that, Ajay. We are doing +1 because like one more level up you're talking from, correct? Even this node, the root node need to be included into the answer, correct? Guys. अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ. मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना. Just talk about this. We'll do that. Don't worry. Right? You're including the root node. That is the reason why you're doing +1, right? Correct? Because including this node, the height will increase by 1 unit. Agreed? Guys? Hello? Right? So, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि how you're connecting this thing. ठीक है? तो आप देखो minimum depth का देखते हैं. What is the question of minimum depth? It says that you are given a tree. ठीक है? Some tree like this. ठीक है? You're supposed to tell what is the minimum depth. Minimum depth मतलब
minimum number of nodes from root to leaf node. You might be tempted to write the same thing as this here also, here as well. तुम सोच सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे मिनिमम क्या है 2 है, राइट? यहाँ से मिनिमम क्या है 1 है, राइट? So यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, मिनिमम कौन सा 1 है, राइट? So 1 plus 1 you will do, that is 2, and you will be returning true. 2 is the answer, final answer. It is correct in this case, right? It is correct in this case. Okay, you might be tempted to write the solution in the same way, right? But let me tell you another case where it won't work. Okay, if you had stayed in the yesterday's class, I discussed this in the end. Okay, I given you a hint. Okay, okay. What I'm saying is you can't write something like this. You can't write it. Right? ये दोनों में से minimum कौन सा है, right? If you add 1, it is not the answer, because in this case you might be getting. Okay, let me take another case of this. यहाँ पे null है, there is nothing, but here you have some value like this, or even one node is fine. ठीक है? Now तुम देख सकते हो, if the minimum depth is called, if it is called on its right subtree, you'll be getting 2 as the answer. If it is called on the left subtree, just because it's a null value, you'll be getting a 2 0 answer. Minimum कौन सा 0 है, correct? Minimum कौन सा 0 है, right? तो minimum 0 लेके +1 कर दो, you'll be doing 1 as the answer. Do you guys agree? 1 हो जाएगा ना आंसर, रोहन? 0 नहीं होगा, right? So the definition of minimum node is minimum number of nodes from the root to the leaf node. Leaf node होना जरूरी है. यहाँ पे देखो, it's not a leaf node, right? This is not a leaf node and this is not a leaf node. तो जब तक leaf node encounter नहीं होगा, तब तक you won't return anything. With that condition, एक बार सोचो, अभी 1 मिनट दे रहा हूँ तुम लोग को, सोचो कैसे लिखते हैं. You just need to eliminate this case. ये है हमारा edge case, जहाँ पे you are just calling it on a null value and you are feeling कि हाँ मैंने कर दिया, ठीक है? वो नहीं है. लीफ नोड होना जरूरी है. देखो यहाँ पे coincidentally this guy became a leaf node, but you need to make it mandate कि वो लीफ नोड हो तब भी रिटर्न हो. Think about it. Few more statements. थोड़ा different है ये, ठीक है? 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो. Guys, any updates? देखो, to the people who didn't understand, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि रूट से लीफ नोड तक जाना है तब भी हो पाएगा. अगर कोई नल है ना, उस पर कॉल ही मत करो ना, करेक्ट? सो यहाँ पे जो मैक्सिमम नोड पे जो कर रहे हैं हम, राइट? सो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर जस्ट मेकिंग इफ रूट इज इक्वल टू नल, वी आर अज्यूमिंग वी विल बी डूइंग इट एवरीवेयर, राइट? यहाँ पे ये चीज करना ही नहीं है. इफ रूट इक्वल टू नल, यू डोंट इवन, लाइक इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नल, यू डोंट इवन कॉल इट. क्या मतलब है मेरा मतलब ये है कि if root has 2 children, दोनों ही चिल्ड्रन है, only at that point क्या करोगे, you will be returning 1 plus minimum depth root dot left, root dot minimum depth and minimum depth of root dot right.
करेक्ट। अगर ये दोनों के पास दोनों ही चिल्ड्रन है, राइट, अगर एक ही चिल्ड्रन है ना, यू जस्ट कॉल फॉर वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ रूट डॉट राइट इज नॉट नल, मतलब लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग पास्ट, इसमें क्या होने वाला है, रूट डॉट राइट इज नॉट नल एंड रूट डॉट लेफ्ट इज ऑल्सो नॉट नल। लेकिन इफ एट ऑल माई कंट्रोल केम हियर, इसका मतलब कोई ना कोई नल है। एग्रीड गाइस? तो इस केस में व्हाट आई विल डू इज root dot null is not equals to null. Only in that case you will be returning 1 plus minimum depth of root dot right. देखो guys इसके बारे में, root dot right you are called because it's not a null value, correct? तो तुम इस केस को अवॉइड ही कर रहे हो, लाइक यहाँ पे root dot right is not null, so you are called on this, ठीक है। बट इस पे हम कॉल ही नहीं करेंगे, इस पे चेक ही नहीं करेंगे, मतलब कॉल ही नहीं करेंगे अगर नल है तो। यही है हमारा रास्ता। डू यू एग्री? सोचो हमारा ट्री ऐसा है, if it's a skewed tree, even in that case, ठीक है, you won't even call here, you will just call 1 plus whatever you get here from this. Even this guy won't be calling from here, you will be calling from here only, whatever you get, whatever you do here, 1 plus whatever you get from this. And इस case में I need to return 1, that is 1 plus, I can't call on the roots on the null value, right? So what I'll do is I'll just identify if it's a leaf node, then I'll return 1 directly. You can say the 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 plus 2 is 3. You'll be returning 3 as the answer. Don't you guys agree with this? Right? तो मैं like I wrote this, ठीक है, एक और बार लिखने दो मुझे, if root dot left is not equals to null, the same treatment, 1 plus minimum depth of root dot left, है कि नहीं? And for this case, when the leaf node is encountered, I just need to check if leaf node is encountered or not. So I'll just check if root dot left is equals to null and root dot right is equals to null. अगर दोनों ही null है, you'll return 1, because इस case में I don't want to call on null and I just want to return from it directly. Agreed? Guys, I just need to write for every case. If it's only having one node, if it is having 2 children, if it is having no children. Agreed, guys? Any doubts in this? How we are writing this code? एक बार code को देखो. You might be getting some doubts. देखो यार, पूरा फंडा ये है कि I should be getting only from root node till whatever is. अगर ये ट्री है मेरा, तो इस पे मैं कॉल ही नहीं करूंगा। ये नल है ना, तो नल पे कॉल ही नहीं करूंगा। I'll just do 1 plus whatever is not null. ये जो भी वैल्यू देगा, और ये वैल्यू 1 देगा, so 1 plus 1 is 2. Clear? That's I want responses, man. Respond करो. Like this is the whole code for the minimum depth. I can code this and show you. ठीक है? First condition में, this is the like leaf node, right? For the leaf node, you don't want to do कि 1 plus 0 and 0 का minimum लेना. I don't want to do that, right? So what I'll do is I'll just return 1 directly. यहाँ से मैं 1 return कर रहा हूँ, because if it is a single node, I am just returning 1 in that statement, and that value I'll be using in the previous call, ठीक है, wherever I made, ठीक है, यहाँ पे I'll be getting 1, 1 plus 1 is 2, ठीक है। अगर दोनों चिल्ड्रन है, then दोनों में से मिनिमम कौन सा, I'll be picking that up, करेक्ट। अगर एक नल है, दूसरा नल नहीं है, तो जो नल नहीं है उससे ले लो 1 प्लस जो भी नल नहीं है। या यू कैन डू दैट, BFS कर लो, BFS करना तो BFS कर लेना एंड जस्ट सी की द लेवल का वैल्यूज बढ़ाते जाना, करेक्ट। यू कैन डू दैट। सी इवन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दैट थिंग, लेकिन ठीक है, यू नीड अ लिटिल मॉडिफिकेशन देयर, क्योंकि जब BFS करोगे तुम यू विल बी फाइंडिंग व्हाट इज द लीफ नोड व्हिच इज हैविंग नो चिल्ड्रन,
matlab which is the leaf node which is occurring first. So that is the minimum depth. Agreed? I'm just showing how you can do it in a recursive terms. Time complexity and space complexity, guys, batao. Hello. Big of n is the space time complexity, correct? Because this is nothing but DFS, right? DFS में हमेशा ये होता है और space भी big of h ही होगा, right? This is the time and space complexity. Correct, Pappu, right? Like if there's only one node, then this particular statement will be triggered. But if there is no node, for that reason, I need to put one more statement. That is, if root is equals to null, return 0. This is not a edge case or base case. This is just a case when root is itself null. So let me code it. Same question. Minimum depth of binary tree. शिवान, BFS अप्रोच एक बार खुद से सोचना, वो खुद से सोचने वाली चीज है. लाइक इट्स नॉट मतलब वो कुछ कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है. मैं बोल रहा हूँ BFS में जब भी तुम एनकाउंटर करोगे कि उसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, जस्ट से दैट मतलब उस लेवल पे रुक गया, मतलब उसी लेवल पे तुम्हारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ऐसे सोचो. इट्स नॉट एनी सॉल्यूशन दैट वी यूज बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है उसका, राइट? तो BFS में इफ यू आर पुटिंग 3 है and then you'll be removing this and you'll be putting 9 and then you'll be putting 20, right? And then 1 the counter, now you made it 2, right? And 9, you can see that 9 का कोई child नहीं है, so you'll stop here and you'll be saying that 2 is the answer. बस the moment when there is no childs, ठीक है, अगर इसका भी child है एक, ठीक है, in that case 9 will be removed and 10 will be pushed, उसके बाद 15 will be pushed, उसके बाद 17 will be pushed, and then when 10 is been removed, then +1, okay, you'll be saying that this is the minimum value. Correct, guys? But it is quite a thinkable thing, okay? Although that is a way to not so good way to do it, because worst case may you'll be traversing the whole street in big of n space, right? So if it is root equals to null, then I'll be returning 0. But if root dot left is equals to null and root dot right is equals to null, in that case you'll be returning 1 because it's a leaf node, right? If root dot left is not equals to null and root dot right is also not equals to null, in that case I can return 1 plus okay. So like in this case when there are two children, two subtrees, then in that case you'll be taking the minimum. अगर देखो अभी क्या है, like ये दोनों पास नहीं, उसका मतलब कोई ना कोई null है और कोई ना कोई null नहीं है, right? So you'll just make this thing, if root dot right is not null, ठीक है, return 1 plus minimum depth of root dot null, root dot right. So even this case भी pass हो गया, इसका मतलब root dot left null है, correct? Is not null, I mean. So in that case I can directly do it. So this is the code, man. It was socho, we are just skipping up the thing that we are not doing there, क्योंकि यहाँ पे minimum में 0 आ जा रहा है हमारे पास, जो कि सही नहीं है. It worked, right, guys?
Hello. Any doubts on this? Right? है ना? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वी कैन स्टॉप, ठीक है? तो देखो यार, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार बताओ। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। एक बार लेट मी थिंक कि कौन सा क्वेश्चन दे तुम लोग को। So it is sum of leaf nodes. Can you guys do this? Hello? Sum of leaf nodes. Guys, easy है. How to do this? देखो, the question is you are given a root of a binary tree, written all the sum of all the leaf nodes. Leaf is the node with no children, है ना? तुम्हें पता है, मतलब 9 plus 15 plus 7 करना है. कैसे करोगे? ये चीज पोर्टल पे है ना? है कि नहीं? पोर्टल पे किधर है यार? डोंट लाइक यू गाइस आर लाइक डिवाइडिंग अ लॉट. मतलब पोर्टल और लीव कोड बहुत ही अलग है, ऐसे करके बिहेव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ओनली कि यहाँ पे इफ वी डोंट हैव द बॉयलर कोड, ठीक है, वी नीड टू डू इट इन दैट वे, ठीक है? तो सम ऑफ द लीफ नोट्स, लेट्स ओपन दिस. लेट मी जस्ट सी कि इसमें है कि नहीं है ना. इसमें जस्ट सी सम ऑफ द लीफ नोट्स इज प्रेजेंट. वी जस्ट नीड टू राइट इट. गाइस, टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. देखो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, बताना सही है कि नहीं, ठीक है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं एक आंसर वेरिएबल मेंटेन करूंगा ग्लोबल, विच इज इनिशियली 0, एंड आई डू प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है? एंड प्री ऑर्डर करते वक्त आई जस्ट चेक कि इफ रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट इज इक्वल टू नल. अगर दोनों ही नल है, मतलब ये लीफ नोड है, करेक्ट? सो इन दैट केस आई जस्ट डू दिस. In all the other cases, what I'll do, I'll just call this pre-order root dot left, pre-order root dot right. Guys, ये कोड काम करेगा कि नहीं करेगा, कोई बता सकता है? Can you guys tell me if this road thing works? I'm just maintaining a global variable, ठीक है? This guy basically इसमें सब values accumulate और you're just doing pre-order. Pre-order मतलब हर एक एलिमेंट के पास एक बार जा रहे हो, right? It will work, correct? तो सोचो, like if you don't want to use a global variable, then how you will be doing it? तो उस टाइम पे you should rely on this का return ना, return type पे rely करना होगा. You are assuming you will write a question that is leave sum, and this guy will return the value. It will take a root, and this guy will return that value. Correct? Correct, guys? तो इसमें भी सेम चीज है. तुम देखो, if the root is leaf node or not, right? If root is leaf node, उसके बाद क्या करोगे? रिटर्न करोगे रूट को, रूट डॉट वैल्यू को, है ना? अगर लीफ नोड नहीं है तो whatever is the values that you are returning, ठीक है, लीव सम से, मतलब लेफ्ट से जो भी आया, राइट से जो भी आया, यू जस्ट मेक द कॉल टू देम एंड ऐड देम. गाइस सी, दिस इज अ ट्री, ठीक है? दिस इज अ ट्री. यहाँ पे हूं, राइट? आई जस्ट सी कि व्हाट इज द सम ऑफ लीफ, लीफ सम, राइट? तो लेफ्ट सम नहीं, लीफ सम, ठीक है?
डोंट कंफ्यूज इट, ठीक है। तो लीफ सम में देखो, अगर वो लीफ है, आई एम रिटर्निंग दैट वैल्यू, ठीक है। मतलब लीफ नहीं है तो आई एम रिटर्निंग कि लेफ्ट से जो भी सम आया और राइट से जो भी सम आया, दोनों को ऐड करके भेजो आगे, राइट। तो उस केस के लिए एक बार सोचो कि दिस गाय इज अ लीफ नोड, राइट। यहाँ पे आते ही 2 विल बी रिटर्न। यहाँ पे अगेन दिस नॉट अ लीफ नोड, सो दिस गाय विल बी कॉलिंग इट्स लीफ नोड्स एंड से कि तुम दोनों जो भी दोगे, जस्ट आई जस्ट सम इट अप एंड आई पास इट ऑन, right? So this guy will be calling these both, and this guy will be returning 4. This guy will be returning 5. 4 plus 5 is 9. So he'll be returning 9, and 9 plus 2 is nothing but 11. I'll be getting the answer 11. At every point, I'm just like, if you are not a leaf node, call your left and right subtrees so that they will give the sum of leaf nodes. If you sum them up, I'll be getting the sum of the whole leaf nodes. क्यों? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। फाइव लीफ नोट्स तो नहीं है। आई डेंट गेट यू खुशी। गैस ये डिफिकल्ट है क्या? नहीं है ना, राइट। तो सोचो यार, लाइक मोस्टली तुम देखो, लाइक इफ यू सी इवन दिस इज अ प्री ऑर्डर कोड, डू यू गैस एग्री? ये भी प्री ऑर्डर है ना। देखो क्या हो रहा है, पहले यू आर लुकिंग एट दैट नोट, मतलब प्रिंट की जगह आई एम जस्ट रिटर्निंग, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट। डोंट यू थिंक दिस इज अ डीएफएस प्री ऑर्डर कोड? I think we need condition for only left वाला null and only right. I don't think we need that, क्योंकि हम starting में ये देख लेंगे, if root equals to null, return 0. क्यों bro? और हमें तो लेफ्ट लीफ नोड का सम रिटर्न करना है, तो हमें 5 को क्यों ऐड करना है? सो इट इज नॉट लेफ्ट, इट इज जस्ट लीफ लीफ नोड, लीफ सम, ठीक है। इट इज लीफ सम, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डोंट कंफ्यूज विद द नेम। मैं गलती से लेफ्ट लीफ को लेफ्ट लिख दिया और तुम लोग कंफ्यूज भी हो गया। डोंट डू दैट। What is 5 is one more node. Sorry, लीफ है ना, ये लीफ है, ठीक है। सो गाइस, इज दिस अ डिफिकल्ट टास्क? देखिए डीएफएस ही है यार, प्री ऑर्डर ही है ये। देखो तुम लोग ट्रैवर्स करते करते यू आर डूइंग सो मेनी ऑपरेशंस, ठीक है। सो आई वांट यू गाइस टू थिंक ऑफ अनदर क्वेश्चन, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सम रूट टू लीफ नंबर्स। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। मतलब you'll be learning a lot in this question. Sum root to leaf numbers. मतलब इट्स लाइक दिस क्वेश्चन, ये अच्छा रिकर्शन क्वेश्चन है, राइट। यू कैन सी दिस द कोड, जस्ट सी कोई किया था कोड सम ऑफ लीफ नोड्स का, राइट। तो आई जस्ट शो यू दिस क्वेश्चन गाइस। सम ऑफ लीफ लेफ्ट लीव्स, ओके, ऑल लेफ्ट लीव्स, ओके ग्रेट। सो अच्छा, ओके देन, सो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस लेफ्ट लीव्स का पूछ रहा है ना, right? So that is not the question which we were discussing. We are just discussing the sum of all the leaves. Right? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? They are only talking about left leaves. So guys, अगर left है तो call for left, ठीक है। अगर left वाला is a leaf node, then call for that, ठीक है। ये तुम लोग करना, it's not that difficult, ठीक है। तुम पहले ये चेक करो कि left वाला is a root or is a leaf node or not, ठीक है। You can do it. It's not that difficult, ठीक है। So my question is this question कि path sum, नहीं ये क्वेश्चन भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, लाइक आई पेस्ट ऑल दीज लिंक्स टुडे, सब ट्राई करना, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि सम रूट टू लीफ नंबर्स,
सो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यू आर गिवन अ रूट, ठीक है, ऑफ द बाइनरी ट्री कंसिस्टिंग ऑफ 0 to n नंबर्स ओनली, ठीक है। तुम्हें you need to return the total number of total sum of all root to leaf numbers, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि what are the numbers that are generated, ठीक है। you can see if you are here, numbers that are generated are 1, 2, मतलब 12 is a number, 1, 3 is another number, you should sum them, that is 25। मतलब you just like every guy is a digit, ठीक है, you just need to build those numbers in that way। let me take another example and let me explain you like this guy। यहाँ पे देखो, this root ये बताएगा 495 and this guy is 40 and this guy is 491। if you sum them up, ठीक है, you should be getting 10, right? 2 यहाँ पे आएगा, so it is 1026। agreed? how to do it guys, एक बार बताओ कैसे करोगे, एक बार ऊपर ऊपर से बताओ कैसे करोगे। लीफ नोड मिलते ही यू विल रिटर्निंग द वैल्यू, है ना, दैट इज द पॉइंट, है ना। अगर लीफ नोड नहीं मिल रहा, यू विल जस्ट यहाँ इस पॉइंट पे यू विल बी समिंग दिस एंड यू विल बी समिंग दिस, जो भी वैल्यू आएगा यू विल बी समिंग दिस, सेम थिंग एज बिफोर। लेकिन यहाँ पे यू विल बी मेंटेनिंग वन वेरिएबल जहाँ पे 4 इनिशियली 4 होगा आंसर उस वेरिएबल में। जैसे इस पॉइंट पे हो गए 4 into 10 + 9 होगा, इट विल बी 49। जैसे इस पॉइंट पे हो गए 49 into 10 + 5, इस पॉइंट पे हो गए 49 into 10 + 1, करेक्ट। सेम क्वेश्चन है जो पहले किए थे, जिसमें यू आर जस्ट टेकिंग द सम ऑफ द रूट नोड्स, है ना, उसका थोड़ा बड़ा भैया ये। हियर वी आर नॉट जस्ट समिंग अप दिस वैल्यू, वी आर समिंग अप द होल रूट का वैल्यू, agreed? here also you are summing up the sum value, leaf value only, but the way it is generated is different, agreed? डीएफएस यूज करो रोहन, डीएफएस इजी है, स्पेस एफिशिएंट भी है, ठीक है। विद एवरी रिकर्शन कॉल, ठीक है, पास दैट नंबर, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि at this point you will be passing the root 4 and you will be passing the value 4। at this point you will be passing root 9 but value 4 only, you will be passing 0 here। at this point you will be passing root 5 and 49 here because you passed from 9, same thing, root 1 49, and at this point you will be returning 491, at this point you will be returning 495, at this point you will be calling root 0 and then 4, but you will be returning 40 as the answer, correct guys? Can you guys do this question? Can I trust you guys to do this question or shall I do it now? Same है यार, ये कोड देखो एक बार, ये कोड देखो, like if you actually understood this code ना, लीफ नंबर्स वाला, the same thing करना है but एक वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे इसकी जगह s into 10 plus root value होगा, बस ये डिफरेंस है, only this difference, correct? ठीक है, कर लो एक बार, सोचो तुम लोग, सोचना, लाइक हर चीज मैं कर लूंगा तो मैं सब कर लूंगा, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं सीखोगे, तुम लोग सोचोगे, थक जाओगे, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा, तब तुम लोग सीखोगे, राइट? कूल। So let's learn one more new topic today, ठीक है। I'll just give the introduction, ठीक है, and then we can go for a break and then you guys can try this question, ठीक है। So the question is कि VST, the topic is VST,
I'm ठीक है, we have done काफी good number of questions, the recursion based and the queue based and the like the templates we understood. ठीक है, काफी अच्छा प्रोग्रेस था, इस प्रोग्रेस को आगे लेके जाओ तुम लोग. ठीक है, just try to do the questions that are present in the, now you guys are capable of doing the question. ठीक है, तो एक बार पोर्टल खोल लो, मतलब पोर्टल पे अगर नहीं है तो डू द सेम क्वेश्चन द लीड कोड. ठीक है, तो लेवल ऑर्डर तो कर ही लोगे, राइट. लेट मी जस्ट ओपन द पोर्टल. जिसका भी बॉयलर कोड है, ठीक है, डू दोस क्वेश्चंस. ठीक है, लाइक डोंट टच द बीएसटी नाउ. ठीक है, बीएसटी आज के बाद. सो हाइट कर लोगे, रूट इक्वल सम ऑफ चिल्ड्रन. कुछ सोचो इसके बारे में. सम ऑफ ऑल नोट्स. हाउ टू डू दिस गाइस? हेलो. सम ऑफ ऑल नोट्स, return the root dot value plus sum of root dot left plus sum of root dot right. हो गया गाइस, यही है ना, यही है सॉल्यूशन मैन, बस हो गया. वन लाइन है. एग्रीड? देखो यार, आंसर वेरिएबल की जरूरत नहीं है रेहान. डू यू एग्री दिस थिंग? हेलो गाइस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? रूट डॉट वैल्यू मतलब उस वैल्यू सम, और लेफ्ट में जो भी सम है और राइट में जो भी सम है ना. व्हाट इज दिस गाय डूइंग? लेफ्ट सब ट्री का पूरा सम दे रहा है, राइट सब ट्री का पूरा सम दे रहा है, और ये वैल्यू का ऐड कर लो, बस हो गया आंसर, है ना. सम ऑफ ऑल नोट्स हो गया. मिनिमम हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री आज क्लास में कहते हैं. सम ऑफ लीफ नोट्स भी क्लास में कर लिए आज, राइट. सिमेट्रिक ट्री, दिस इज आल्सो फॉर होमवर्क. ठीक है, आई ओपन दिस, आई थॉट ऑफ टीचिंग यू. लेकिन सिमेट्रिक ट्री का मतलब ये है कि मिरर इमेज की तरह होने वाला है. यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 होना चाहिए. इट्स नॉट सेम ट्री, इट्स सिमेट्रिक ट्री. मतलब एक ही ट्री देंगे. ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुमको इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करना है. तुमको इस वैल्यू और इस वैल्यू का मिरर इमेज लेना है, और इस वैल्यू और इस वैल्यू का मिरर इमेज लेना है. सेम फंक्शन यू विल कॉल इट फॉर दीज बोथ. सेम फंक्शन यू विल कॉल फॉर दीज बोथ. सेम फंक्शन यू विल कॉल फॉर दीज बोथ. करेक्ट? ट्राई टू थिंक. सब ट्री सेम की तरह नहीं है, लेकिन उल्टा है, राइट. यू विल बी कंपेयरिंग दिस गाय विद दिस गाय, सॉरी दिस गाय विद दिस गाय, दिस गाय विद दिस गाय. मतलब इसका राइट इसका लेफ्ट से कंपेयर होगा, इसका लेफ्ट इसका राइट से कंपेयर होगा. ऐसे करो. सिमेट्रिक ट्री हो गया. देखो वी डन ऑल द क्वेश्चंस ऑन ट्रीज. ठीक है, और लाइक ट्रीज 1 में देखते हैं क्या है. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, यू नो, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, रिकर्शन तुम लोग कर लोगे, सेम ट्री कर लोगे, प्री ऑर्डर कर लोगे. कूल गाइस, लर्नड अ लॉट. ठीक है, so now let's start. Are you guys high enough with the josh to start a new topic? Won't take much time. Start कर दूंगा and then we can take a break. Correct? high है ना जोश? ठीक है, चलो let's get started. ठीक है, it is binary tree but S is nothing but search, so it is binary search tree. Search tree, it's a new term, right? Search. तो देखो यार, this is a binary tree. This is a special type of binary tree. Binary tree. This guy is a special type of binary tree. ठीक है, लेकिन इसमें ये होने वाला है ना. ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी है, इसलिए वो स्पेशल है. द प्रॉपर्टी इज कि वैल्यू ऑफ द लेफ्ट नोड शुड बी लेस देन द पेरेंट. पेरेंट मतलब जो रूट है. एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ राइट नोड should be greater than the parent. And this thing is recursively true for all values, for all nodes. I'll tell you what. Okay, it means that, okay, for example, if you have created a tree of with the root node as 9, I'm just taking an arbitrary number 9.
ठीक है. So it says that all the elements on its left subtree should be less than the 9 value, and all the elements in the right subtree should be greater than the value 9. And this thing is recursively true for every value. ठीक है, मतलब अगर समझ लो 1 to like 50 हो सकता है नंबर्स, राइट, पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड. तो इस पूरा सब ट्री में बस 1 to 9 तक, 1 to 8 तक ही हो सकता है, नॉट इवन 9, 1 to 8 तक ही हो सकता है. लाइक दिस वैल्यू कैन ओनली बी 1 to 8. ठीक है, लेट अस अज्यूम 5 है. ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू इट्स अ रिकर्सिव प्रॉपर्टी. सो इस पॉइंट पे लाइक इसका सब ट्री में ऑल द वैल्यूज लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब 1 to 4 ही हो सकते हैं. Is this making sense, guys? And on the right part, the values can be from 6 to 8 range, because this point pe the value should be greater than this. I told you, right? The right node should be greater than the parent. Left node should always be less than the parent. Okay? So you can see that since you are in the left tree of 9, the value should be less than 8. But since you're in the right tree of the 5, you should be some 7 or something. The value can be 7. इसका लेफ्ट में 6 हो सकता है, इसका राइट में 8 हो सकता है. दिस इज अ रूल आई एम पुटिंग. यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा, यहाँ पे समझ लो 2 है. ठीक है, सो इस पार्ट पे यू कैन ओनली हैव 3 और 4 वैल्यूज, 3 और 4 है ना. इस पॉइंट पे यू कैन ओनली हैव 1. एग्रीड? सेम थिंग गोस हियर मैन. ठीक है, यहाँ पे यू कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 9, मतलब 9 to 50 हो सकता है कोई भी वैल्यू. लेट अस अज्यूम 15 है यहाँ पे, राइट. तो 15 से भी ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे हो सकता है, 15 to 50 मतलब 49, ये 50. And all the values ranging from 10 to 14 will be here in this left subtree, the whole subtree, right? एक बार सोचो इसके बारे में ध्यान से, मतलब एक बार देखो इसको, एक बार just look at the beauty of this tree. ठीक है, all the elements in left subtree should be less than root, and all the elements in right subtree are greater than root. ठीक है, and this is recursively true for all. रिपीटेशन अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, समझ लो. ठीक है, अभी के लिए पॉसिबल नहीं है. जो ट्री तुम लोग सोच रहे हो उसके लिए पॉसिबल नहीं है रिपीटेशन. दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री. अब मैं बोलूंगा बाइनरी सर्च क्यों है, लेकिन एक बार ध्यान से देखना इसके बारे में, मतलब एक बार इसका ब्यूटी को अप्रिशिएट करो तुम लोग कि रूट है, रूट के सब लेफ्ट में जो भी वैल्यूज है सब कम होंगे रूट से, एंड जो भी वैल्यूज राइट सब ट्री में होंगे सब ज्यादा होंगे रूट से. जस्ट अप्रिशिएट दैट थिंग. देख मैक्सिमम 50 तक ही हो सकता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ब्रो. ठीक है, हाँ वो दैट इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. ठीक है, इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल सो दैट यू गाइस वोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, तो समझ लो मेरे पास सब नेचुरल नंबर्स हो सकता है, तो 1 to integer max is a level, correct? तो समझ लो I have a value like 10 here. So all the values ranging from 1 to 10 minus 1, that is 9, right? 1 to 9 will be in my left subtree. All the values from 11 till int max will be on the right subtree. ठीक है guys, समझ लो यहाँ पे 7 रख दिया मैं. ठीक है, तो like all the values from 1 to 7 minus 1 will be on the left subtree, and all the values from 8 to 10 minus 1, मतलब 7 plus 1 to 10 minus 1 will be here, correct, in this particular subtree अगर बनेगी तो. सेम वे यहाँ पे कोई भी वैल्यू 2 है, 12 है, तो 11 यहाँ पे हो सकता है बस.
और बाकी जो भी वैल्यूज ग्रेटर देन 12 एंड int max will be here. 12 plus 1, I mean. Are you guys able to see how it is working? है ना? देखो इसके बारे में। अभी मैं बोलूंगा यार 15 कहाँ रहेगा। 15 देखो, पहले तुम यहाँ होगे, तुम देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस। 15 राइट साइड होगा, इसका भी राइट साइड होगा, तो यहाँ पे रख सकता हूँ 15, करेक्ट। अगर मैं 17 रखना चाहता हूँ तो 17 विल गो हियर, बट मैं 14 रखना चाहता हूँ 14 विल गो हियर, राइट। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल वे इन व्हिच इट इज arranged so that it will provide us with a great advantage of such time, ठीक है। So I'll tell you how, ठीक है, I'll tell you how, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक BST दिया, this is a BST, ठीक है, so I'll say can you search, ठीक है, और can you search if 9 is there or not, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट, 9 should be on the left part of this, correct guys। एक बार देखो ध्यान से, I am at this position and I want to search for 9, right? I am here and I know that 9 will be only in its left subtree, it won't be in the right subtree. Do you guys agree? Correct. तो अगर वो लेफ्ट सबट्री में है तो I can just completely discard this whole space of the values, which could be half of the values, right? If at all it's a balanced BST, it could be half of the values, right? So you will reach here again, यहाँ पे 9 will be on the right side of this, right? तो पूरा लेफ्ट साइड को वापस डिस्कार्ड करो पूरा। डोंट यू थिंक हम ये चीज कहीं करते थे? याद आ रहा है कुछ? हम जब सॉर्टेड एरे लेते थे, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। इफ यू वांट टू सर्च फॉर 8, ठीक है, तो यू विल गो हियर इन द मिडिल, ठीक है, एंड यू यूज्ड टू डिस्कार्ड दिस होल थिंग बिकॉज यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हो सकता है, राइट। देन यू विल गो हियर एंड देन यू विल सर्च फॉर दिस, राइट। 7 पकड़ा तो तुम सोचोगे कि लेफ्ट में कुछ हो ही नहीं सकता, तो यू विल गो हियर, यू विल गो एंड सर्च हियर, right? So like discarding half of the space, same thing यहाँ पे नहीं हो रहा, like you're discarding this half of the space, again this half of the space, ठीक है। if at all it's a balanced BST, don't you think log n time में you can search any value in this search space? half हो रहा है मतलब log n हो जाएगा ना, do you guys know, right? n हो गया, n/2 search space हो गया, फिर n/4 हो जाता है, फिर n/8 हो जाता है, फिर वैसे वैसे करके 2 पर k पे 1 हो जाएगा, then k is nothing but log n, right? ये काफी बार बता चुके हैं, correct? So in log n steps you can reach, but यहाँ पे log n नहीं है, यहाँ पे big of h है। अगर h is log n, that is balanced binary tree है या balanced tree है, तब log n बोल सकते हो, वरना try to think, एक ट्री दे रहा हूं मैं तुम्हें, like 9, नहीं 9 नहीं, छोटो सिंपल ट्री देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5। Do you agree that this is a binary search tree, guys? Guys, is this a binary search tree? Yes, it is a binary search tree. It is following all the properties, but it is not a balanced binary search tree. ठीक है, तो अभी सर्च टाइम होने वाला है big of h, that is nothing but big of n, right? लेकिन अगर वो बैलेंस्ड है, अगर मैं इसी को मैं ऐसे बनाया, 3 will be यहाँ पे, ठीक है, फिर 2 will be here, ठीक है, 1 will be here, right? And in the same way 4 will be here and 5 will be here. So you might not be seeing this in very great way, ठीक है। अगर मैं 2-3 और एलिमेंट बढ़ाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो लेट मी जस्ट सी। तो 4 को बीच में रखा, and then let me put 2 here, let me put 1 here and let me put 3 here. Same way 6 को यहाँ रखूंगा, 5 को यहाँ रखूंगा and 7 को यहाँ रखूंगा। If you want to search for any value, समझ लो 3 चाहिए मुझे, तो लेफ्ट में होगा, 3 चाहिए राइट में होगा, 2 स्टेप्स में मिल गया मुझे, राइट। अगर मुझे 7 चाहिए, राइट में होगा, राइट में होगा। डोंट यू थिंक दिस इज अ मोर बैलेंस, दिस इज आल्सो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज आल्सो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, राइट। सो time complexity for searching in a balanced tree, I mean binary search tree, is big of h, but in the balanced binary search tree h will become log n, so it is log n, so hence the name binary search,
you're doing the binary search here in the tree terms. ट्री में तुम बाइनरी सर्च कर रहे हो, सोचो, राइट गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? विल कम बैक, ठीक है, विल डिस्कस, राइट? सो बट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट यू आर डिस्कार्डिंग हाफ ऑफ द लाइक इस तरफ जाने के लिए तुम पूरा राइट सब ट्री को डिस्कार्ड कर रहे हो, और राइट जाने के लिए पूरा लेफ्ट सब ट्री को डिस्कार्ड कर रहे हो. एट एवरी पॉइंट योर सर्च स्पेस इज बिकमिंग हाफ if at all it's a balanced binary search tree, right? So hence the name binary search. ठीक है, तो हम हमेशा ऐसे ही कोशिश करेंगे कि बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाए, बट एट टाइम्स नहीं बन पाता. एट दैट टाइम इट इज, बट इट इज बेटर देन सर्चिंग इन अ ट्री, राइट? हाउ टू सर्च इन अ नॉर्मल ट्री? नॉर्मल ट्री में क्या करोगे? प्री ऑर्डर करो, मतलब डीएफएस करो बेसिकली, राइट? एंड प्रिंट करने की जगह बस सर्च करो. We did this question yesterday, right guys? If root dot value equals to value, return true, right? या return that root, है ना? So in that way, right? तो वरना return from left and return from right, in that way you should do, right? It is taking big of n time, लेकिन यहाँ पे big of n in the worst case में skewed binary tree होगा तो big of n होगा, वरना ऐसे नहीं होने वाला. Agreed? Correct? So it's a very cool tree. Okay, we'll learn how to build this tree. We'll learn how to delete the elements in this tree. We'll learn how everything after the break. Okay. So abhi ke liye, for the break, you guys have two questions. You guys can try this question. Validate BST. This is a nice question, man. Validate BST. ठीक है. So like question simple है. जो भी मैंने बताया था वही चीज करो इसके लिए भी. Right. So I'll just not show you guys the solution. ठीक है. Okay. Correct. ठीक है. So just read this question. I'm just putting it and try to do this question, guys. If you're able to do it, it's great. Okay, you will be able to do it. Okay, इतना मुश्किल नहीं है. And after this, we'll learn all the other stuff of BST. Okay. So we'll be back. It's 9:57. Try this question and try one more question which we were discussing. है ना? Some root to leaf numbers, right? So after that, we'll be back by 10:18. Okay. So try to do questions to the people who are not able to solve, to the people who are don't want to go to lunch. Okay. Use this time properly, or take some rest also. 10 minutes rest भी लेना. ठीक है. I'll be back.
Hi guys. Hello. I'm back. Are you guys there? Hello. Okay, man. Great that you guys are there. Okay. So did anyone try to do this question? Anything productive happened? Do let me know. Okay, cool. So let's do this question. Okay. So I hope everyone is back. Let me just see the number of hands raised. I just want to see the strength that is responding right now. So can you guys raise your hands? Yeah. So I'll just create a poll. So we'll be learning few things. Don't leave the class. We will be learning important things now. Okay. Okay, cool. I need to get that mail. Okay. Very few students raised their hand. I think no one is there. Not all people are there here. So anyway, guys, let's continue. Okay. So what I'm saying is, this is same thing, man. Like just see how did they define the BHT, right? So determine if it's a valid BHT or not. ठीक है, valid मतलब जो भी properties मैंने बोला था, that should be true, right? Valid if the BHT is defined as follow. The left subtree of the node contains only nodes with the keys less than the node keys, right? I told you, left subtree of the node contains only keys with key मतलब value है ना? मतलब key मतलब जो भी item है, element है, they are referring it as key, right? So keys less than the nodes key. Now all the values should be less than the nodes key. Yeah, right subtree of the tree should contain only the values greater than the nodes key. Both right and left subtree should also be binary search trees. Okay, guys, are you there? Hello. Right. So that is the question. So they say that you're supposed to return true or false if it's a valid binary search tree or not, right? So let me just do that. Okay. Let me just do that, but how to do it? That is another question. Let me look at the constraint. See this. Look at the constraint. This is the minimum element, minimum integer value, right? And this is the maximum integer value. Do you guys know? Hello? Are you guys able to understand? Okay. So I'll be doing the same thing as I was doing before. Okay. I'll just consider key at every point. I'll just see if this root is under the range of minimum or maximum. That is what the first thing I'll do. Okay. Matlab int minimum. Look, I'll just tell you how I'll be doing. Let me just close this. So if it is a valid binary search tree or not, to determine that, okay, what I'll be doing is I'll be first searching. I'll be just passing two variables in a function. Okay, one is called low and other one is called high, and I'll just determine key low should be less something like this. Okay, मतलब 2 should be less than low and less than high. Initially low or high का value है int minimum and int maximum. Correct? यहाँ पे आते ही right, it will be low का value int minimum होने वाला है and maximum value is going to be 1. मतलब इसका previous value -1. Are you guys understanding what's happening? समझ लो 4 है. If we have 3 here and if we have 4 here, if we have 2 here and if we have 1 here, right? Is this a valid BHT? ठीक है? To say that, ठीक है? To search that thing, ठीक है? So we'll go here and we'll just see. We'll just see कि int minimum value and int max value. ये दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? Yes, it is coming in between them. So it's great.
लेकिन यहाँ पे the left guy is going to be int minimum value and int maximum value should be 4, correct? Only इसका 5 minus 1 should be there. So I'll just check कि is 3 greater than int minimum and less than or equal to 4, correct? It is valid. So I'll do the same thing again. Recursively, I'll call for both the values. यहाँ पे I'll be calling for 6 and int maximum value, right? I'll just check कि if 8 is in this range or not. Is this the right way to do, guys? Can you guys tell me? This is how I defined the BST, right? So I'll do the same thing to use it. यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि int minimum minimum हो सकता है and maximum value is going to be 3. Sorry, 2. है ना? यहाँ पे the value is going to be 4,4 क्योंकि 3 plus 1 is 4 and यहाँ पे जो है, see when I'm moving to the right child, I'm putting the right constant as constant, right? When I'm moving to the left one, I'm putting the left constant as the constant one. Do you guys agree? Hello. Is this making sense, guys? है ना? So I am just using the range. ठीक है? Initially, this is the range where this value could be any of the value it can take. But after that, ठीक है? I want, if I'm going to the left, I want the value to be 5 minus 1. The maximum value to be 5 minus 1. If I'm going to the right, I want it to be 5 plus 1 minimum value. Correct? So if I'm going to the left, I'll do the right shift. So I'll be continuing the same constraint on the left one, but I'll be doing 5 minus 1 here. I'll be doing 5 plus 1 here. Is this making sense? How many guys didn't get it? एक बार hand raise करो. Raise your hands if you didn't get it. Okay, so it's about the validation part, man. Like it's about the validation part, how you'll be using the range. Okay, how you'll be using the range. Okay, कल मैं जैसे first example में I was saying कि 1,9. ठीक है, I told कि 1 to 50 हो सकता है maximum. So if there is any value, it should be in this range 1 to 8. 5 is a 1 to 8 range band, right? So, but if I'm calling to the left child, then it should be 1 to 5 minus 1 range, correct? Because all the values are supposed to be less than this 5. The same thing will go for here, right? It is 5 plus 1 say, like the minimum value will be changing, correct? Because in the right part, you want all the elements to be greater than this particular value, correct? So let me just quickly code it. Okay, then we can move forward. You can do that, Joshna. That is much simpler, to be honest. You can do that. कर लो वो चीज. लेकिन again ना, yeah, you can do that, Abdul. एक बार बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए. Like इसको और भी recursive way में कर सकते हो. ठीक है? तुम like the way we are talking is you're just looking at left child, and if you're looking at normal child, and then you're looking at right child, right? And you'll also need to call the same function for its left child as well as right child as well. Do you agree, Joshna? Correct. You know that देखो, if you have a BST, it's not sufficient. Okay? If you have some notes, something like this, you don't know what is there. You only know these 3 values. So you'll compare these 3 values. Key is 4 less than 5 less than 7. If true, then you'll call this also. Here also you'll be calling is valid BST. You should check key this is also BST or not, right? Because you're not sure about these things. The same thing you can call is valid BST here as well, and check if this is also correct or not. You can do it in this way also. Abdul and Joshna has pointed out, and that is correct. Right? This is another way of doing this problem, which I wanted to discuss, but since you guys told it, so never mind. Agreed, guys? है ना? तो ये चीज का ध्यान दो, ठीक है? ये चीज का ध्यान दो. It will work. शायद you are making some problem. ठीक है? You call it for root dot. तो तुम्हें बस 3 चीज करना होगा. एक, this is true, and left वाला भी binary search tree है, and right वाला भी binary search tree है. Correct? समझ नहीं आया क्या संजय? Did you get it? Guys, are you there? Hello? हाँ, एक बार unmute कर लो. Like if you didn't get it,
एक बार हैंड रेज करना, I'll unmute you. हेलो हेलो हाँ ब्रो, सर। हाँ ब्रो बताओ। वैसे मेरे को ये डाउट था, जैसे आपने जो पिछला अभी लिखा हुआ था सर्च ट्री, वो दिखा सकते हैं? हम्म जैसे 5 के नीचे 7 था, हम्म, 5 के पे? नीचे 8 है, हाँ और 8 के इस साइड में अगर लेफ्ट साइड में 4 रहेगा तो फिर वो अप्रोच वर्क नहीं करेगी ना। हम सिर्फ हाँ वही 3 बोल को रहा हूँ चेक ना। कर पा रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ये 3 को चेक करो अभी के लिए। अरे सेम ट्री में क्या सर कर रहा है, मैं बता रहा हूँ सुनो। सेम ट्री में क्या कर रहे हैं, पी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्यू डॉट वैल्यू कर रहे हो। यू जस्ट लुकिंग एट, देखो सेम ट्री में यू हैव टू ट्रीज, एग्रीड। ये सब ट्री अलग है, ये सब ट्री अलग है, करेक्ट। द सेम थिंग यस गोस हियर, राइट। तो ये वैल्यू जो है पी, ये वैल्यू जो है क्यू, तुम इसको ही चेक कर रहे हो, है ना। यस एंड यू आर चेकिंग कि ये दोनों सेम है कि नहीं। यू आर कॉलिंग द सेम फंक्शन फॉर दीज बोथ कैंडिडेट्स एज वेल, करेक्ट। ओके। So you'll use the same logic here. You'll just check for this. You just check कि root dot left अगर exist करता है, dot value should be less than root dot value, ठीक है। And root dot value should be, क्या लिखा हूं मैं, हाँ, should be less than, है ना, should be less than root dot right dot value। तुम पहले चेक कर लो, नल चेक करना होगा तुम्हें कि if root dot value exists or not, root dot right exists or not। वो सब करने के बाद, ठीक है, दिस विल बी योर चेकिंग। एंड इसके बाद यू विल बी राइटिंग इज वैलिड BST टू योर रूट डॉट लेफ्ट। यू विल बी कॉलिंग इज वैलिड BST ऑन रूट डॉट राइट एज वेल। सेम लॉजिक है सम ट्री की तरह। तुम यू आर चेकिंग कि तुम्हारा जो सब ट्री है लेफ्ट वाला एंड तुम्हारा जो सब ट्री है राइट वाला, वो भी BST है कि नहीं, वो भी चेक करना है ना तुम्हें, ब्रो। ओके, गॉट इट। वही बोल रहा हो तुम कि यू आर सेइंग कि इस केस में फेल हो जाएगा। यू आर जस्ट लुकिंग एट 3 वैल्यूज, करेक्ट। लेकिन इस केस में ये ट्रू आएगा, तब भी तो तीनों ट्रू होंगे। ये भी ट्रू आना चाहिए, ये भी ट्रू आना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ट्रू, करेक्ट यस सर। है कि नहीं। दैट्स व्हाट, समझ गया ना। सो दिस यस अनदर सर। अप्रोच, ठीक है। मैं अपना रेंज वाला अप्रोच लेके जा रहा हूँ आगे, ठीक है। रेंज वाला अप्रोच इज आल्सो नॉट बैड, ठीक है। सो लेट मी डू इट। Let me create an helper function, ठीक है। So let me mark it as, it is also a boolean value with helper, and this guy will be taking a root, and this guy will be taking a value like int low and int high. See this, एक बार देखो। Now what I'll be doing, I'll be just checking, पहला चीज तो मैं ये चेक करूंगा कि कहीं रूट नल तो नहीं है। अगर रूट नल है, in that case I'll return true, right। and उसके बाद I'll be just saying कि जो current value है, I need to compare it, so let me take it as current and let me do at root dot value, है ना। वैल्यू होता है या डेटा होता है, आई एम नॉट श्योर क्या है, ऊपर देखना पड़ेगा, को देखने दो। इट इज रूट डॉट वैल्यू, करेक्ट। नाउ उसके बाद व्हाट आई विल बी डूइंग इज, आई विल बी जस्ट चेकिंग, आई विल बी जस्ट टेकिंग अ बूलियन वैल्यू व्हिच इज इनिशियली फॉल्स, ठीक है। बट इफ एट ऑल करंट is greater than or equal to low, right, and current is less than or equal to high, so it based on कि high और low का value क्या लेने वाला हूँ, I'll make it true। अगर ऐसा है, I'll make it true। I'll use this variable now to put it into the answer, ठीक है। Now I'll use this variable, okay, a and, ठीक है। So I can use it directly, I can use this thing directly, ठीक है। It will be looking much simpler, ठीक है। But I'm just I just want to decrease the line size, so I'm doing it in this way, ठीक है। तो अभी मैं ये करने वाला हूँ a and, ठीक है, I'll be calling the helper with root, but अभी I'm calling root dot left ना, I'm calling root dot left, ठीक है। तो एक ट्री का, ये समझ लो 5 है, रूट डॉट लेफ्ट कॉल कर रहा हूँ, तो उसका रेंज क्या बदलने वाला है, उसका रेंज रूट डॉट वैल्यू का -1 होगा ना, हाई वैल्यू,
करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट कॉल कर रहा हूँ, एंड बाकी तो लो विल बी द सेम. एग्रीड? सो लेट मी डू इट. इफ आई एम कॉलिंग फॉर रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है, so let me just make the low as the same value, but high value will be current minus 1. So same thing, let me do it for the next call also. Root dot right, इसमें high लिखो. I'm sorry, high नहीं लिखता है, ठीक है. इसमें क्या लिखना है, एक बार सोचो कि यहाँ पे in this subtree you want low value to be edited as 5 plus 1, correct? 5 plus 1 से ही होना चाहिए, and high will be the same value, correct? So I'll be writing current plus 1 and then I'll be writing high. बस यार हो गया. मैं ये भी ना लिखूं तो I can just copy this thing and instead of this a and everything I can just do this as well directly. This is much simpler, right? Guys, एक बार देखो इसको. This is the code. This is the whole code. I'll see that, Sanjay. ठीक है, I'll just show you. ठीक है, now let's take an example of this. ठीक है, let me take an example of this. अब देखो, now I'll be calling this helper function in the isValid BST. Right? How I'll be calling? I'll be calling return helper with the root value as well as integer dot min value. Correct? Integer dot max value. These are the two things. Right? These are the range in which it is there. Correct? So I'm just checking कि एक बार देखो इसको बताओ. Right? You are here. Right? You are putting integer minimum value, that is 2 power 32 and 2 power 31 minus 1. ठीक है? I'll just check कि if this guy is greater than or not. Obviously it is greater than and it is lying in this range. Correct? So cool. So you will call for the left subtree. Right? The left subtree you will be calling it for the same low value. Low value is same, minus 2 power 31, but high value is current minus 1, that is 4. 4 is maximum value. So you can see that 1 is less than 4 and it is greater than the low value. So he will call for its null values and they will return true, true. So everything will be true. So from here you will be getting the true value. Okay? And this is anyway true, right? This statement is anyway true. This statement is you're getting true from the left subtree. Now in the right subtree, you'll be calling it with current plus 1 value, that is 6 and 2 power 31 minus 1. You just check if 4 is in between them. So 4 is not in between them, right? So in the first statement already failed, so it will return a false statement here. So 2 trues and 1 false, everything will be false. You'll be getting everything as the false for this statement. Do you guys agree? Hello? अगर समझ लो ये 7 होता, ठीक है, तब you'll be returning true, but again you'll be checking for the these statements. अगर ये 6 होता, right, in that case he will return true, and this guy 8 होता, so he will return true, and everything will be true, and this will be also returning true. So all these 3 are true, so you'll be returning true. 3 conditions are checked. One, is this satisfying? Second thing, is the left guy satisfying? Is the right guy satisfying? This is much simpler in terms of, you know, so this is like DFS, direct DFS, correct? So वो चीज भी सही है जो तुम कर रहे हो, right? You'll be calling this function on the left subtree and you'll be calling the same function from the right subtree as well. So you'll be recursively doing it for every subtree, correct? So even that is not wrong, right? Even that is also taking big of n time. Everything is same, okay? But it's the implementation में difference है, correct? So this case will fail for one value, okay? I'll tell you for which value it is going to fail. I should be using long here because since I'm making current minus 1, current plus 1, okay, it could be possible that this current value is a int negative value or int minimum value, right? In that case, for that test case, I think it will fail. Let me just see. Yeah, it fails, right? You can say that it's an int negative value, and I'm trying to do an arithmetics on that value, which will give a wrong answer, correct? So let me just put it in a long value, and let me put these guys as the long values as only.
ठीक है, always this is a better way to do, because we don't have to deal with the overflow condition, right? So let me submit this code. Yeah, it got accepted. See guys, it is faster, it is good, correct? Hello everyone, any doubts in validate PST? No, right? किसी को कोई भी डाउट अभी पूछ लो. लाइन 25 पर करंट की जगह रूट डॉट वैल्यू. यार ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों होंगे, क्यों ही होंगे, एक बार बताओ. इट विल वर्क मैन. फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम डूइंग. Cannot find the symbol. Acha, I need to convert this as well, na? Okay, let me do that. So I don't want to do root dot value every time. That is the reason I was having a so I'm facing an error here. Why? The same error I'm facing, right? So this guy, okay, this particular guy, root dot value, it's an int value, correct? Guys, right? So it's an int value. When you're doing an int, देखो ये negative value है, ठीक है? अगर ये negative value पे if I'm doing -1, it will be a largest positive value. Do you agree, guys? Overflow condition, है ना? तो this operation I want it to be done in a long value, long fashion मैं चाहता हूँ कि हो, right? So I'll just have a typecasting of long. Same thing goes here. I'll do a long casting of long. ठीक है? Let me run this. Now this arithmetics, whatever is happening, that will happen in long. I think I should be putting another bracket. Let's see if it is working or not. Right, it is working. See. So like यहाँ पे जो element placed है जिस पे operations हो रहा है वो integer पे होगा. If you are working on two integers, ठीक है, ठीक है. So दोनों का arithmetics will happen in an integer only, right? Unless you specify it as a long value, correct? Is that making sense, Sanjay? ठीक है, वो ठीक है. Even though they are a long values, ठीक है. What I'm saying is यहाँ पे operation होने के बाद they are being put into a long value, right? I should be careful about this thing only, ना. 3 + 5 जब हो रहा है, it is happening in integer, and then that is converted to long, right? But I want this to be done in the long only because I don't want to overflow anything. Do you agree, Sanjay? समझा? If you're having, देखो ये simple चीज है, like I lost 1 mark in my semester exams because of this, ठीक है? So if you're, देखो, if you are having an integer a which is some 10, and if you're having an integer b which is some value 3, what do you think will happen if you do 10/3? 3 आएगा, ठीक है? Because, ठीक है, because these guys are integers, right? So integers will make the things happen in integer only, ठीक है? So even though if you have a float answer equals to 10/3 a/b, अगर तुम ये भी करोगे ना, ठीक है? So I did this thing only, ठीक है? Still you will be getting 3 as the answer. You won't be getting 3.3 as the answer because so my professor told me कि भैया ऐसा नहीं होने वाला. मैंने यही चीज किया, ठीक है? मैंने यही चीज किया था कि मेरा इंटीजर है, कुछ कुछ वैल्यूज है, राइट? आई एम डूइंग दिस डिवीजन एंड आई एम पुटिंग इन फ्लोट और मैं आंसर को प्रिंट कर रहा था, लाइक मतलब रिटर्न में लिखना है ये चीज. सो आई एम नॉट ट्राइंग इट ऑन अ कंपाइलर, राइट? बट ही डिटेक्टेड मार्क्स बिकॉज he said that whenever two integers are operating with each other, the operations will happen in integer. Okay? Even though you're putting float here, this integer will be converted to float after this operation is performed, not while performing it. ठीक है? So इन दोनों को अगर तुम float करोगे, ठीक है, तब this operation will happen in float and you will be getting 3.33 and will be the answer. So this is what he told, right? So that is the same example as this.
राइट? तो अगर मैं इसको L करूंगा, राइट, आई टोल्ड यू दिस थिंग एज वेल, ठीक है? तो एक बार ये ट्राई करते हैं, 1 को मैं L कर दिया, 1L मतलब इट्स अ लॉन्ग वैल्यू, राइट? दिस गाय इज अ लॉन्ग वैल्यू. हाँ, float a by b will be 3.3, correct Reni, that is correct, because अब देखो मैं इसको 1L कर दिया ना, see this is a long value, right? I am performing one integer with a long value, तो ये पूरा proper मतलब पूरा operation long में होने वाला है, and you see you are getting a correct accepted answer. Do you guys agree with this? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब चीजें एग्जाम में कहा जाएंगे तुम्हारा मार्क्स, ठीक है? इफ यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, तुम कितना भी सोच लो, तुम्हें समझ नहीं आ गई ये चीज, राइट? इफ यू आर इन एग्जाम एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दिस वर्क, ठीक है, यू लॉस्ट इट, यू लॉस्ट द एग्जाम, राइट? यू लूज एवरीथिंग. मतलब दैट पर्टिकुलर कंपनी का यू कांट क्लियर इफ यू आर नॉट एबल टू गेट क्लियर्ड विद दिस सच थिंग्स, ठीक है? सो सच थिंग्स व्हेन यू विल लर्न, हाउ यू विल लर्न, these are not the things that you will be finding very practical and every day, right? You will be finding them more, the more you practice, the more you will be finding such situations where you will be realizing how this works, right? तो जितना तो प्रैक्टिस करोगे इतना नया प्रॉब्लम्स फेस करोगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करोगे. उस प्रॉब्लम अगर सेम प्रॉब्लम आ गई ना, ठीक है, इफ द सेम प्रॉब्लम हैज कम to 10 people or 200 people, you will be in the one person who can solve this problem and you can move forward. It means that it's not that you have great knowledge, it's just that you solved this problem before. Correct, Sanjay? Correct. So 1L means that 1 as a long number, it's a long number, right? तो मैं जैसे ही 128 या कोई भी नंबर लिखता हूँ, हमारा कंपाइलर समझ लेगा कि ये इंटीजर है, लेकिन मैं उसके पीछे L लिखूंगा, it will understand that this is a long number, है ना? Just like मैं 0 और x लिखूंगा, it will understand it as a hexadecimal value, correct? The same way, if I write L, ठीक है, after a number, it will be considered as a long value. And if I perform long, मतलब long a equals to 1 and int b equals to 2, if I do a plus b, this operation will happen in long. मतलब ऑपरेशन के लिए एक प्लेस चाहिए ना, एक टेबल चाहिए जिसपे होने वाला है, वो टेबल बनेगा लॉन्ग. अगर दोनों ही इंटीजर है तो इंटीजर टेबल ही बनेगा, अनलेस यू स्पेसिफाई कि लॉन्ग में होना. ठीक है गाइस, दिस इज कूल. करेक्ट, चले आगे. ठीक है, ट्राई सच थिंग्स. ठीक है, जैसे तुम लोगों ने ब्रेक में ये कोशिश करके मेरे से पूछा, इसलिए मैं बता पाया ना. करेक्ट, like it is completely impossible to see कि what type of problems you guys will be facing unless you tell it, right? So वैसे ही देखो करने की वजह से कितना फायदा हुआ तुम लोग का. करेक्ट, और फ्लोट और इंट के केस में क्या होगा, इंट ही होगा, इंट में ही होगा ना. आई टोल्ड यू दिस थिंग, राइट? इंट a इक्वल्स टू 10 है, इंट b इक्वल्स टू 3 है. इफ यू डू दिस थिंग a by b, इट विल बी एन इंट. अच्छा, फ्लोट में तुम बताओ, टेल मी दिस थिंग. If one is int, another one is float, and if you do this thing, this will become this or this will become this. Tell me, it will always broaden up, right? बड़ा होगा, right? So एक बार हायरार्की देखना नंबर सिस्टम का, कौन सा किस में बढ़ेगा वो देखो. It will widen, always widen. ठीक है, सोचो इसके बारे में थोड़ा. ठीक है, do such things. See, like to be honest, मैं C++ में कोडिंग करता हूँ. ठीक है, so unless like at some point, ठीक है, I faced an issue, ठीक है, when I was a student, कि एक 2D array को I'm not able to pass into a function. I just couldn't do it. मतलब 2D array को मतलब कैसे पास करना, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम था. I don't remember the problem. ठीक है, I don't know how to do it. I was searching, I was googling, मतलब कुछ किया, I found out the fix. ठीक है, at that time I got saved. I got the same problem sometime. I realized how to do it. इस बार याद हो गया मुझे. और I think SAP Labs में the same question came where I'm supposed to do something like this, and I did it. And after the class, most of the people like कि यार ये हो ही नहीं रहा.
But since I did it few months back or few weeks back, the same problem occurred. Not the same question, the same problem occurred, for which I found the fix. Okay, I'm the one who taught everyone कि नहीं इसको ऐसे pass करना है, right? तो तुम like that's what the practice, man. It's all about practice. Practice is not just to memorize the things. It's about to face the problems and fix them as well. ठीक है? Cool, guys. Shall we move forward? Right? Search a BST. This is the question, right? Matlab, I'm not sure how much you guys are able to do with BST, but I'm just assuming that you guys understood the property of BST, right? And let us assume I want to search a value in the BST. How do we do it? Try to think, guys, how do we do it? ये तो सब बहुत सिंपल है ना. Try to think कैसे करेंगे, right? You can do it in a recursive way, you can do it in a iterative way as well. ठीक है, both the things you can do. ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना iterative में. You just compare if root dot value is greater than the key मतलब जो तुम सर्च कर रहे हो, right? You need to go to left, right? So root equals to root dot left. Else if root dot value is less than key, you'll do root equals to root dot right. Right? In the else condition, you'll return root. And you'll do this thing while root is not equals to null. Guys? No, we don't do DFS. Because if we do DFS, okay, like there's no point in using BST, right? It will go big of n, right? Correct. So at the end, you can return null. Don't you think, guys, this is correct? See what you're doing. You are having a position, right? And if you want to search for any value, like I'm sorry, यहाँ पे 3 रखो, and यहाँ पे 4 रखो, and यहाँ पे 1 रखो, and यहाँ पे 8 रखना, यहाँ पे 7 रखना, 6 रखना, 10, 9. Okay. So if you want to search 7, what you'll do? You'll go here. You'll see that, oh, I need a value greater than this. So I'll go to right side, right? I need a value less than this. So I'll go to left side. Do you guys agree? If you reached it, you'll return it. Do you guys agree? This is the code to search a value in a BST. Hello. Again. So it will be done in what time complexity? Log n. हाँ, log n big of h actually. लेकिन big of log n हो जाएगा तब when it is a balanced BST, है ना? If it is a skewed BST, then it will be big of n, है ना? So save option के लिए you will always say it is big of h. H is the height. You won't say big of h. You will be saying big of h, where h is the height of that BST. If it is a balanced BST, it will be in the order of big of log n. If it is a skewed BST, it will be big of n. Right? Guys, is this question clear? How do we do it in recursive way? Tell me, Chirag, how do you do it in recursive way? एक बताओ, तुम ही बताओ. चल फंक्शन लिख लेते हैं, search BST. चिराग आ जाओ, हैंड रेस करो. Let's figure it out. कैसे करते हैं इसको? मुझे भी नहीं पता, तुम ही बताओ. बताओ यार कैसे करें? How to do it? हाँ, no worries. एक बार आ जाओ ना. एक बार let's discuss. Anyone who wanna discuss, just come up.
node. Anyone? Khushi wants to discuss. Let's see. Hello. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Yeah, Kushi, you're audible. यस सर, तो हम इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि सपोज लाइक वी हैव हमारे पास 3 नोड्स हैं, ओके? तो सपोज करिए एक नोड है 2 और उसके लेफ्ट में है राइट 1 और उसके राइट में है 3. राइट में 3 नहीं हो सकता ब्रो. अच्छा इसके. ओके यस सर. ओके ओके. और सर अब हमें सपोज करिए 3 सर्च करना है. ओके. तो हम क्या कर सकते हैं ना कि अगर वो जैसे कि 3 हमारा 2 से बड़ा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम रूट की वैल्यू जो लो पॉइंट होगा उसमें हम +1 कर देंगे और सेम फिर वही फंक्शन रिटर्न कर देंगे. देखो खुशी, try to think in a, देखो recursion जब भी आता है, try to think of a smaller problem. I told you this thing, right? यस सर. Right? Khushi, right? So what I'm saying is, what is the smaller problem? You are here. You have provided this route to this search BST. This guy is supposed to return the node of the value, correct? यस सर. So what I'll say is, I'll just check this value. This value is 2. What I'm searching for is 3, right? So this is not the value, right? So I'll just check ki, if root dot value is less than key, matlab ye wala case mein, what I will do ki this guy is less than the value which I'm searching for, so my value is going to be in the right subtree. Do you agree? Yes, it might not be here, it could be 4 here, okay, 4 ka yahan pe, but it will be here, right? So don't you think this is a smaller input for the same question? Yes, sir. Right? So I'll just call this. Then in that case, return search BST with root dot right. ये value कम है, so I'm going to the right subtree to find it. Else, ठीक है? Else if root dot value is greater than the key, अगर ये ज़्यादा है, I'll be returning search BST of the left subtree. क्यों? यस सर. तो सर जैसे हमने पिछले वो वैलिडेट वाले क्वेश्चन में हमने वो वैल्यू लेकर करा था, वैसे हम यहाँ पर नहीं कर सकते. मतलब यहाँ पर हमें वैल्यू सर्च करनी है कि सर सिर्फ नोड सर्च करना है? हमें नोड सर्च करना है ना. You're doing it as if it's a validate binary search tree, right? तो तुम वही चीज है ना. हाँ, you can move it, लेकिन point ये है कि you can move, you are just like, oh, at every point you have 2 decisions to make, either to go left or go right. Agreed? Yes, sir. Khushi, so I'm just saying कि why to go left? If at all, if you go left, then you'll be facing only the lesser values, but you want greater values than this, correct? So you'll go to the right value, correct? Again यहाँ पे भी same thing होगा, left value पाएगा at some point, ठीक है? मतलब else में you'll be returning root, क्योंकि else is the point, मतलब once the moment you reach here, this is the point where you're supposed to return this final answer, ना? So this will be return, and you will be returning as the answer. यहाँ पे बस एक केस होगा कि if at all root is equals to null, in that case you will be returning null. Null का मतलब है कि the value is not present in the BST. Guys? Yes, sir. Yes, what you're saying is also what's happening. What you're saying is also correct. Okay, I won't say it will be wrong, but again there are many attributes to consider at the same point, right? But if you can easily go to left and right, okay, देखो वहां पे the reason why I choose to using 2 attributes is that I need to go to every value. Left में भी जाना, right में भी जाना, तो जिस तरह जा रहा हूँ उस तरह I'm like whichever way I'm going, in that way I'm increasing the left and right attribute, right? लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है. I just need to go it in this way, correct? Let's take a bigger example, like if at all it's 7, 6, नहीं यहाँ पे 6 ले लो and 7 यहाँ पे रखो, then यहाँ पे 9 होने वाला है, right? And यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा and यहाँ पे 1 होगा, right? So I'll be searching for what? I'll be searching for 10. तो तुम यहाँ पे आओगे,
you can see that root dot right पे कॉल होगा, root dot right पे कॉल होगा. Root dot right is a null, so you will be returning null, 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 and everything will be null, right? Null will be written, null will be written, null will be written. You will be returning null. So if you wanted to search for 7, right, you'll be calling here 7 is greater than this value. Root dot value is less than the key, right? So root dot right पे कॉल होगा. Again, root dot value is greater than the key, so root dot left पे कॉल होगा. You are here, and now I want 7 that is greater than this, so you'll be here. At the end you found it, so you'll return the root. So this guy will be returned, this guy will be returned, this guy will be returning it, and you'll be returning this value. Don't you think you're doing it in a very good way, faster way? उसमें सर हमको हर वैल्यू हर नोड पर जाना पड़ रहा था. हाँ, वहां पे हर नोड पर जाना पड़ रहा है ना, करेक्ट. Yes, sir. यहाँ पे we are just making the decision. वहां पे the time complexity is big of n because you're going for every value. What is the time complexity here, Kushi? सर यहाँ पर अगर बैलेंस्ड होगा तो log n हो जाएगा हमारा. Big of h बोल दो, करेक्ट. हाँ सर. हेलो, हाँ ये सब big of h हो जाएगा. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम big of h हो क्योंकि हम वो DSF कर रहे थे. Correct, right? You're not doing depth first search. तुम यहाँ पे like you'll be staying here, you'll be calling this, you'll be calling this, you'll be calling this, right? Drashti is saying if we do this way, we'll end up losing the root. No, we won't end up losing the root. Okay, we are not updating the root anywhere. Have you seen that? We are returning, like you'll be getting the node of that value from this value, from this function. Okay, so you are just returning this thing, you are returning this thing. So you will return this node, you will return this node, you will return this node as a function ka return type. Okay, you're not updating the root anywhere, you are just returning the function ka return type. Correct. So space will also be big of h because this guy is called this, this guy is called this, this guy is called this, and all of these are staying in the stack, right? So the moment we found it, we'll go back. So at max, it will be big of h. Correct. If it is not found, you will be returning null. Correct. Guys, is the recursive approach clear as well? Correct. Anna, making sense, guys? Thanks, Kushi, for helping me. ठीक है, चिराग, is this clear? देखो सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है. तुम यहाँ पे यू विल बी लूजिंग द रूट, ठीक है. तो इसको टेम्प मान लो, ठीक है. इसको टेम्प बोलो, रूट मत बोलो, टेम्प बोलो, टेम्प. सो द पर्सन Drashti should be telling me कि यहाँ पे आई एम लूजिंग द रूट का आइडेंटिटी, सो आई शुड बी रिटर्निंग टेम्प इंस्टेड ऑफ रूट. ये करना चाहिए मुझे. यहाँ पे आई विल बी लूजिंग, राइट. सो इनिशियली मैं टेम्प के अंदर मैं रूट का वैल्यू डाल लूंगा, then I'll be doing that. Correct, guys? Shall we move forward? Hello. Correct, Drashti. यहाँ पे you should be updating temp instead of root. Correct. यहाँ पे we are not returning, we are not making any changes to the root, right? We are just returning it as a return type in the function. Correct. Is that clear now? You are correct. Thanks for pointing me out for that. Okay, you should be using temp variable, which is temp is nothing but temp is equals to root initially, but it will be changing soon. Guys, is this clear? Hello. Shall we move forward? This is Josh. Hi.
थोड़ा देर और लाइक थोड़ा देर और 10-15 मिनट I'll leave you. ठीक है, ठीक है. तो now the question is कि convert. So I won't be able to teach insertion deletion today. ठीक है, so let's take that up tomorrow. Tomorrow कैसे हो पाएगा यार? Let's take that up on Sunday. ठीक है, 1 o'clock पर रखेंगे, right? And I'll complete the BST that day. ठीक है, पूरा insertion deletion सब सिखा दूंगा इससे, right? So today we'll be doing one more question, easier question. You'll be having contest discussion. Let's have that for 1 hour. ठीक है, contest discussion. उसके बाद we'll do it. ठीक है. चले guys, let's go. ठीक है, तो देखो convert sorted array to BST. This is the question. Cool, right? Like if you have an array like this, how do you convert into BST? That is the question. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है तुम लोग को ये क्वेश्चन, ठीक है, लाइक इट इज नॉट, है ना, इट इज नॉट लाइक एवरीथिंग. ठीक है, तो यार सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है. ठीक है, मैं क्या करूंगा, 1 लूंगा, उसका राइट वाला नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा, उसका राइट वाला नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा. आई विल यूज अ लूप टू डू दिस थिंग. डोंट यू थिंक दिस इज अ BST guys? यस, सो आंसर हो गया, करेक्ट हो गया, पास हो गया, नहीं, राइट? So yeah, it is a good solution to be honest. ठीक है, but the problem is कि he wants not just BST, he wants a balanced BST. ठीक है, अगर BST है तो ये तो लिंक लिस्ट से भी गंदा हो गया ना, लाइक इट इज लाइक अ लिंक लिस्ट, राइट? तो कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें और इसमें, करेक्ट Selvi, right? So like this is the wrong way, right? I need to create a balanced one, correct? So how do we do it? एक बार let me open the question first. Convert sorted array to binary search tree code. This is the last question that you guys are going to solve. ठीक है, so guys see this. ठीक है, you have this array. ठीक है, and don't bother about the output. You are supposed to return a tree बस. ठीक है, so how do you do it? ठीक है, so you can see that any of them is fine. ठीक है, this is also highly balanced binary search tree, this is also high balanced binary search tree, right? So just think about this guys, how do you do it? ठीक है, most of the people are saying कि mid value को root बना लूंगा, correct? So yeah, correct. मतलब think about this कि ये जो array है इसका अगर मैं mid value लूंगा, like if you have an array like this, if I take the mid value, ठीक है, and if I store it in a node, if I make a node out of it, ठीक है, and I can say that all these values, all the values that are on the right part will be my right subtree, and all the values on the left part are left subtree. Do you agree? Correct. So बस like I so देखो वापस recursion का काम, right? So just see, like I am just giving an array, ठीक है, convert BST है, function का नाम convert BST है. This guy will just take an array, ठीक है, array, and he'll just return a tree from it. ठीक है, तो same thing ना, I'll create a node out of the middle value, ठीक है, and then I'll call the same function for this array, and I'll call the same function from this array, and I'll make this guy, ठीक है, ये node जो बनी है, node temp equals to new node with ARR of mid. I'll use temp.write
equals to whatever the BST that is made using this array. Do you agree? Temp dot write is equals to convert BST with this sub array, because I'm assuming that this is working, right? This guy will take up this array and this whole array, okay, and convert it into BST. I just need to make the one step, the conversion step, correct? Same way, temp dot left equals to convert BST with this array. Agreed, guys? And then I'll return temp. Now be socho, just look at the beauty how this is working. Okay, so I can just say कि if I take 4, okay, if I create a node and I'll assign the same thing, okay, because I know all the values that are after it will be forming a BST, okay, and they will be assigning, they uska head मुझे वापस होगा resign. So I'll be just holding it same way. First half of the array के लिए भी I'll be doing the same thing, correct? So ये जो like the same thing will go here. यहाँ पे middle value calculate होगा. Middle value is 8, right? So 8 right value and then another mid value is 12, right? So you can see that 12 will be made and then 12 will be made. This will be written here. So this will be written here. And 1 maybe like you can call 1 यहाँ पे आएगा, right? 1 will be called here and 2 will be called here, right? And then this will be written and then you will be having this as the BST. It's a balanced BST, right? Correct. So you just need to make this step. एक node बनाओ और pass it on with a smaller input with the same function. Recursion call करो कि this guy will return. बस है ना? Same thing will happen here. If the elements are none, then you will be returning null. So null null होगा, everything will be null. Right, guys? Did I confuse you by telling this? मतलब implementation you might not be imagining it, but the same thing, man. The recursion वाला है ना? तो देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि how do you minimize the sub array का size? मतलब उसके लिए काफी methods है, right? यहाँ पे you can call it from 0 to n-1. यहाँ पे you can call it to mid plus 1 to n-1. Correct? मतलब this is the only sub array that they will consider. Same thing, 0 to mid minus 1. Correct? मतलब first half of the array, second half of the array. Put it into the convert BST. Assume that this guy is working and giving me a BST. Assign it to the temp dot right. Same thing goes for the temp dot left. क्यों? So then you will be making a balanced binary search tree. Agreed? Guys? Hello. Let me just code it. Again, let me just code it again. So let me just create another helper function which I'll be using. So this guy will be taking a nums array. He'll be taking 0 because all the values length dot length minus 1. So let me just create that helper function here. So this guy helper will be returning tree node. This guy will be taking nums array, right? And he'll be taking low value and he'll be taking high value, L and high. Right? Now you can see that it is a helper function, right? So you can think of that in this way. So what is the breaking point? Breaking point ये है कि when there are no elements left, correct? Guys, no elements कब left होगा? जब L will be greater than H. In that case, I'll return null. कोई element ही left नहीं है. In the other cases, I'll be just creating a mid value. That is nothing but L plus H minus L by 2. Correct? And if at all temp is some
new node that we have created, new tree node. So it will take this value ARR of mid, right? So I've actually created a node of the middle node. Now I'll make this guy, I'll call the same function helper, because helper is taking the range of the values and producing a tree, right? So I'll be using the same function. Okay, I'll be using the same function. And I'll be calling everything the same, except left should be from 0 to mid -1. So this is the index that I'm talking about, right? Because of mid I made a element. Now mid -1 say I'm creating another subtree. Agreed? Why h -1? It is not h -1, it is h minus L. Okay. So Som Sundar, this is one of the technique that will be taught in binary search time. Okay. So L plus h by 2 is nothing but L plus h minus L by 2. एक बार देखो mathematically same आएंगे, right? 2 आएगा, 2L plus h minus L. That will be, this will be cancelled, and it will be L plus h by 2. Right? It is the same thing. The reason why we do this over this is the same thing which I told in the last class. मतलब last class नहीं, last question. L plus h जब करोगे, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर का ऐड करोगे तो इंटीजर पे होगा, तो वो ओवरफ्लो कर सकता है कभी, करेक्ट? उसके बाद बाई 2 होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरफ्लो हो जाएगा ना इन दिस केस, right? So what do we do is we will be doing L plus h minus L by 2. This will be always in the integer range only, because h is in the integer range, L is also in the integer range. The difference between them will also be in integer range, correct? That is the reason why do we do this. You can do this also, but like this is to overcome the overflow condition. Yeah. So line number 27 realize nahi ho raha. Okay. See this, Drashti. Dekho, like this will be the root of this particular call, right? You have created the node. Okay. You have called for the temp left, and you have made another tree, and you have made that point to left value. You have made this point to right value, and you will be returning temp, correct? Because that will be the root. For example, if you have values like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, if 4 is the root, okay, and you call the same function for these three values as well, call the same function for these three values as well, they will return a tree and pointed it out. You should be returning this as the root, right? Because you're supposed to, at the end, you're supposed to return this only, right? The same thing will happen here also. Like you will be returning 6 as the head, and that head will be pointed to this person, correct? थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम लोग को इसमें. ये जो रिटर्न होगा that will be pointed by this guy जो previously कॉल किया था उसको. So like try to think कि पहला कॉल में क्या होने वाला है. पहला कॉल में you should be returning this, that is anyway there, but in the second call and the third recursive call, even then they are being returned because there is someone who is waiting for them to be pointed towards them, correct? किसी को डाउट है इसमें? Anyone? This is how you create a tree using a balanced binary search tree using a sorted array, correct? So tomorrow we'll be discussing how to actually insert an element. Try to do as many questions as possible, ठीक है? In this, तो जो भी छोटे-छोटे questions कर लेना. जो भी क्वेश्चन उसका नाम सर्च करो गूगल पे, एंड अगर वहां पे बॉयलर कोड नहीं मिल रहा, अगर बॉयलर कोड तो मिल रहा है फॉर एवरीवन, if you're not able to search it, try it in the lead code also, it's fine. Insert that particular
but this is when array is given, right? But when a root node of unbalanced BST is given and how to balance it. Try to think of that, Preetham. Okay. And there's one more thing, guys. I want you guys to notice this thing. कि एक बार सोचो इसके बारे में. एक BST का in order traversal करके देखो यार एक बार. एक बार सोच के देखो in order traversal में होता क्या है? Left node and then right. Don't you think एक sorted value मिलेगा, sorted array मिलेगा हमें? करेक्ट. एक बार ट्राई करो ये चीज ट्राई करके बताना, क्योंकि लेफ्ट नोड एंड राइट यू नो दैट लेफ्ट में सब कम वैल्यूज होंगे और रिकर्सिवली इट विल बी ट्रू फॉर इंटरनल लेफ्ट आल्सो. तो ये भी एलएनआर होगा, ये भी एनएलआर होगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. डोंट यू थिंक? गाइस, है ना? व्हाट डू यू थिंक इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर टू क्रिएट big of n? Right, it is also pre-order. If you look at it, okay, everything you're doing is like every recursion question is pre-order. Just look at it, man, how beautifully it is done, right? So okay, it is big of n. Okay, I agree. Okay, again, now this time I can say that space complexity is log n 100%, because you're doing the binary search. Each में you're dividing and then putting it here, putting that there, right? So number of stack ka values will be log n. Do all the questions, guys. I'll take a leave. ठीक है, हैप्पी दिवाली. नहीं, हैप्पी दिवाली रुको, संडे बोलूंगा. ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, वही जो हमेशा बोलता हूँ. ठीक है, कंसिडर देम आई टोल्ड एंड गुड नाइट. हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू. अमेज़न में पटाखे भेज, ये कब सोने लग गया? संजय, गलत लाइन में जा रहे हो तुम. I remember from my childhood that using 2,000 rupees we used to buy the crackers, and like we used to get a lot of crackers for 2,000 rupees, right? But now now for 2,000 nothing, we are getting nothing. Inflation. Do you guys know about inflation? पढ़ना ये सब जब जॉब करने लगोगे ये सब के बारे में पढ़ना चाहिए. इंश्योरेंस, यू नो, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग. काफी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए. टैक्सेस, इनकम टैक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जाता है मेरा ये सब पढ़ने के बारे में. इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, राइट? So I hope you guys also will be having that. Yeah, I can. हाँ, you guys need it. ठीक है, तो जो भी प्लेस हो जाएंगे इस बैच से, like I'll be taking a class कि यार ये कर लो, ये कर लो, इतना पैसा कैसे यूज करो. ठीक है, let's see. वो जरूरी है यार, फाइनेंशियल लिटरेसी इज रियली इंपॉर्टेंट. ये सब स्कूल में सिखाना चाहिए हमको, सिखाते ही नहीं है स्कूल में. राइट प्रीतम, हो जाएगा यार, एवरीवन विल गेट प्लेस. ठीक है, जस्ट वर्क. ठीक है, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, हो जाएगा. ठीक है, so let's end the class. I'll put all these things in there, no worries.
guys, do read whatever I'm sending in the chat. Okay, not in the chat, in the notes. Okay, I'm sending it right away.